BCIPS, I extend a warm welcome to our director, Dr. Recording in progress. Radhika, you can just repeat because I just started the. That's perfectly all right, sir. Okay. Good afternoon, everyone. Welcome to the concluded day of our faculty development program. On behalf of BCIPS, I extend a warm welcome to our director, Dr. Aparna Mishra, our resource person for today, Mr. Vivek Gupta, and all our committed participants. It's been a remarkable journey over the past few days, and I hope you found these sessions both enriching and inspiring. Today's session will explore leveraging AI in research, a topic that is becoming increasingly relevant in our rapidly evolving academic and professional landscapes. It is my pleasure to introduce our esteemed guest speaker, Mr. Vivek Gupta. Mr. Gupta is currently an assistant professor in the Information Technology and Systems area at the Indian Institute of Management, Lucknow. Before joining IIM Lucknow in 2001, Mr. Gupta accumulated 14 years of diverse experience working with notable organizations such as OMC Computers Limited, HCL Technologies Limited, Ericsson's HP India Limited, and All India Radio. During his tenure, he held several senior and middle management positions, contributing significantly to various projects. His teaching and research interests include IS/IT usage, organizational IS/IT outsourcing, network security, information data privacy, digital payment systems, blockchain, and the application of AI tools in research and business. With his extensive experience and deep insights, Mr. Gupta is well equipped to guide us through the complexities of leveraging AI in the research. Without further ado, please join me in welcoming Mr. Vivek Gupta. Thank you so much for being here today, sir. Thank you so much, Sadhika. You have been doing a great service all these 4 days. Thank you so Thank you much. so much. And I was really enjoying my 4 days stint as a student, and these 1 year 4 months, that is around 16 months of crazy times. Why I say 16 months? Because it was in March last year when I created my ChatGPT account. I I don't know how I didn't come to know for first 4 months. So amongst the 29 of you present, how many of you had created the account between 30th November 2022 till March, February end? So how many were senior to me by way of creating the ChatGPT account? So what I mean is 1st of this December to 28th of February. Is there anyone who had created the ChatGPT account at that point in time? Or everybody created after me only? Is my voice coming? Yes, sir. So amongst the, I think how many, 43 or 44 participants are there, right? Are you able to see the content? Yes. Tanushri, is there anyone, can I use the name without the prefixes which you have put on your details? I hope nobody minds. Yes, sir, absolutely. Yes, Is sir. there anyone older than 58 years of age? So the first question I asked was, how many of you created the
Just a minute, I'll just set this up. How many of you have created the account in December, January, February when this ChatGPT came out? There is a setting in Zoom, that is why I like it, where I can, because many of you would not be keeping your video off. Currently only Sadhika's video is off. So should I also switch it off? That's what we used to do in pandemic also. There are few people who, thank you, Renu ma'am, you were there in March, right? Thank you. Because of Renu ma'am, I am here today. And you are muted, ma'am, right now. Sir, good afternoon. Thank you so much. Good afternoon, ma'am. So what started as a small exercise in March 22nd, that time also मैं थोड़ा सा पागल था, बहुत ज़्यादा पागल हो गया हूँ, because you will not believe. Today only 11 o'clock there was a session about 10 kilometers away. There is a triple IT Lucknow. Yes, sir. There is a lady by the name of Lekha Bajpayee, ma'am. Right. Her email ID is lekhabajpayee@gmail.com. She is a CTO in Mumbai. Her son is a data scientist in US Berkeley. She was talking about generative AI. And I was so amazed by the presentation what she gave. And what made me, after seeing that, what made me think was how poor We are knowledge. I think we are the one. But I took her permission. I said, ma'am, I am rushing. I just came back from that place at about 1:30, 1:40. And I took her permission that, ma'am, I'm going to have a session with 43 more budding people. Can I share your PPT? So she has sent me her PPT also. I'll give you that. See, what I'm trying to say is whatever is happening now, it is changing at such a pace that none of us individual teachers, right? Most of us are teachers, right? When I was going through that Excel sheet, there is one designation I found called teacher. So that is Sushil Dalal. Sushil Dalalji is there? Sir, yes, sir. I'm here. Sir, you have Yeah. just written teacher, and I am so very happy because I also want to treat myself as teacher only. All of us are teacher first, then all these. Yeah. Yes, sir. I joined the teaching profession in 2001, sir. Good. You are same to same. Thank you, sir. Thank you very much. So where are you teaching? Sir, I'm in a small town that is called Rohtak in Haryana. Okay. So Thank you. what are the subjects you are teaching? I'm teaching geography. Great. Geography was my favorite subject in schools. It's I great, used to sir. love It's great. geography. So how have you been using ChatGPT or any AI tool in geography? I'm trying to learn it where I can use geography and give it to my students. That's why I joined this course. I found that there is a lecture on leveraging AI. That's why I joined only because of this lecture. Because I'm trying to find out where in my subject I can use AI. So let's be in touch. Your name is not coming in that Zoom because you have not renamed yourself. Are you aware of how to use Zoom? You can go to the Zoom, click on participants, go to the right-hand side, and click against your name, and you can rename yourself. It's currently showing only Zoom user. Okay, sir. Okay. So there is one more person who just mentioned her designation as student. Neha ma'am.
I hope you got all the documents which I sent you yesterday. Are you there? Yeah, ma'am, is my voice reaching you? You are there, I think. I don't know. We are all joining from different parts of the country where rains are happening, lights are going, all kinds of things are happening. Neha, ma'am, are you able to hear me? I see your name, but there's only one Neha, I think, and I'm happy. And there are 11 research scholars. Now, all these research scholars who are there, are they PhD students? Gitanjali, Mangatram, Megha, Mary, Silvarani, Rumjhum, Jebapriya, Seema, Vijay, Vikas, Vikram. I'm not taking attendance, don't worry. I don't know whether my voice is reaching. Yes? Yes, sir, you're audible, sir. Okay, good. So are the 11 students are there? Or some of them are there? I think attendance is less or what? 10 people are not there, right? 10 or 11. Okay. We have head of the department, Professor Dr. Divya. Ma'am, are you there? Divya ma'am is apparently not there. Is another head of the department and Professor Rajesh Chaudhary ji. Rajesh ji is there. I hope everybody is able to connect to the Zoom and they are able to mute and unmute, because I have not set up any setting where you will not be able to unmute, right? There is a setting like that, but I have apparently not set that. So you can. And then there is a big chunk of, there is only one associate professor, Dr. Sarita Chaudhary. Are you, ma'am? And 26 plus me, there are 27 assistant professors. Sir, I am also associate professor. I got that designation from the Department of Higher Okay, Education. okay, good. So there are two, because your designation was teacher, so it will not show up in the pivot table. Yeah, because I like this word. That's why Yes, I. very good. I also Yeah. do that. Whenever anybody asks what you do, I say I am a teacher. That's all. Yeah. And before being a teacher, since pandemic, I keep saying that I am more a student than a teacher. So I'll come to what Madam Lekha said. I'll share with you later on that day, right? Later after the class. Let me very quickly start with the session. Hopefully people are there. They might be having their lunch and other things. Fine. They will gradually. So this is the topic, leveraging AI in research. Now, I'll not, I put AI in brackets because you can put many other things, because you have to leverage many things in research, right? AI just came in the being in last 1.5 years to 2 years. But even before that, when AI was not there, right? Even then, what were the things which you were leveraging to do better in research? And there have been two excellent faculty members already for the last 2 days. Is my voice reaching properly? Please keep telling me whenever I am not audible. Please put it in chat, or you can raise hands, etc. Voice audible? Yes, sir, you're audible, sir. Okay, thank you. So I'll keep
my monologue on. Hopefully, I'll get some response in the meanwhile. And Dr. Keyur was very good in making everybody participate. So I was just asking what were the things prior to AI we were trying to leverage in research. Just dump one or two keywords on the chat. I'll read it from there. Or you can speak also. You can type or you can speak. Everybody is welcome. Voice is low. My voice is low. No, sir, it's fine. Okay. So what were you leveraging? All of us have been in academics before 22 also, right? Before the advent of AI. How are we doing research? Library, yes. I remember in my 1995. Now HP, I don't know what is the name, ma'am or sir. This was HP. Sir, Aditi. Aditi, just you can rename yourself because that's another, because nowadays Zoom is a part and parcel of our, you can just click on participant, go to the right, rename yourself. Aditi says library. Yes, I remember my MTech days. See this. This is brief about whatever I did. What is it? It's a slide, but what type of diagram is that? Anybody? Sir, it's your profile and experiences, I think. But what type of diagram it is called? Taruna ma'am? For switching on video, anybody switches on, I'll have to do that. Whenever anybody switches, everybody is off, I will switch off. Simple. So what type of diagram is this? Heard of something called mind map? Yes, sir. And there is another thing called concept map. And both of these were created by the respective Tony Buzan. Tony Buzan created this in, I think, late 60s. And Professor Novak created concept map also, I think, late 60s or 70s. And for concept map, you have a site called cmap.ihmc.us. And it's a freely downloadable software. Unlike Microsoft, it has lesser features and you will use all the features. Microsoft you have many features which you don't use. So the problem all of us researchers, including research scholars and faculty members, are facing now is you have to not only keep on doing bulk of your research the way you have been doing, right? Whatever lacunas we had, whatever gaps we have had in our fundamental knowledge or foundational knowledge at that point in time, they still remain in us. We have to be aware of that and we have to keep working to improve upon that. Now, suddenly we have these tools which have come. Some of the people who are savvier than us, who are more IT savvier than us, they are able to use it and they are able to flaunt it also. And some of them may not be even ready to share their knowledge with others. They think if they know it, they can play with it for the time being till everybody doesn't come to know. And it so happened 30th November when ChatGPT came and Turnitin started checking for plagiarism only in June 2023. So in that intermediate 5 to 6 months, there were hundreds and thousands of papers which got written. Majority of them are not the product of the authors. And those products are getting now retracted. There is a site called Retraction Watch.
there is a site called Retraction Watch. So please, for the sake of our well-being, research well-being, and our future, I would request each one of the researchers, in whichever stage of research they are, first year, or they are in the about to retire, in whichever levels of research you are, please try to use these AI tools with utmost caution and ethics. Even if we get some paper published, when last March, when I came to know about this, the first immediate thought which came to me that now I will be able to generate a lot of papers. I have not written a single paper since March, because the more I am becoming aware of these tools, the more worrisome it becomes that if you use these, you will probably be doing a shoddier job than what we are individually capable of. But that does not mean that these tools are not good for us. They are extremely good, because some of us will be very, very uh, uh, worried about seeing a blank Word document, right? When we sit about writing. So at least many of these tools will enable you to take help of these AI tools to give us a start, right? So, okay, because this is called mind map. So my first degree was in 87, electronic communication, ECE, which has expired, long expired. Then I joined OMC Computers Limited, in which I gave my UPSC engineering services, got Indian Broadcasting Engineering Services, landed up in All India Radio. Between 95-96, I took study leave and did my MTech at IIT Delhi. So that was computer technology. Came back to All India Radio and worked in the computer center for some period. Then I got transferred. My son was young, so I had to quit the job. I joined HCL Technologies. My wife is a pediatric surgeon. She moved to Lucknow. So I tried moving to Lucknow and joined IIM Lucknow. My PhD came late. I submitted my PhD in 2016. And after review, because it's an international, one faculty is from international. So after review, I was awarded the PhD late in the day in 2018. So I am like, as far as I'm might be very junior to most of you who might have got the PhDs before that. But all these degrees have expired long back. So, and in between 6 months, I worked in EHPT, right? So very quickly, I would like to talk about one more thing, because I was saying leveraging AI in research. Remember, anyone who, and Renu ma'am might recollect that I asked something similar there. Anybody knows what happened in 2008? What did CBSE did in 2008? Anyone who has kids who were in class 8th in 2008? Anyone? Anyone knew what happened in 2008 by CBSE? It has created DigiLocker or something else. I'm not sure. Another hint. Renu ma'am, you remember? What does HOT means? Now, are you able to recollect? Higher order thinking skills were introduced in the schools.
And what is this higher order thinking? Heard of this? Is there any youngest research scholar amongst the 11 of you? Anybody is there? I want someone else to share their screen. Just share your screen, please. Who would want to share their screen? Some of you would be on laptops, right? Pin drop silence in the afternoon. Karoji is writing it is used to define course objectives. Good. Which is used? Bloom's taxonomy? Dr. Deepika, thank you so much. Ma'am, just click a tab, a new tab. Just click on a new tab. जस्ट प्लस प्लस साइन है ना मैम, वो फायरवॉल ऑथेंटिकेशन के बगल में प्लस साइन है टॉप में, प्लस प्लस पे क्लिक कर दीजिए, नया टैब आ जाएगा क्रोम में, न्यू टैब विल कम। हाँ, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन के बगल में एक प्लस साइन है। यस, जस्ट टाइप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग। व्हाई एम आई टेलिंग यू बिफोर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग? I hope some of you would have been aware of this, right? Yes, sir. Good. Thank you, Renu ma'am. And thank you, Gaurav ji. Gaurav Mitra. Yes. So now just click on that image, ma'am, on the right hand side. There are 3 domains you can learn. This is a homework for all of you. Cognitive domain. I am talking about the 6 levels of learning. Cognitive domain. There is an affective domain. There is a psychomotor domain. Just click on this, ma'am. So originally, I think in late 50s, Bloom gave this taxonomy that there are 6 levels of learning as far as cognitive learning is concerned. And till up to graduate level, most of us, including our teachers, they used to ask, can you just zoom it slightly? Is there any way to zoom? Just press the control button and the scroll bar on your mouse. Yes, very good, ma'am. Thank you. Move it up. So there are 6 levels of learning. That's what Bloom said. Original. Remember, understand, apply. And the kind of questions teachers used to ask till up to graduate level were based on the lower 3 levels: recall facts, define, duplicate, list, memorize, repeat, state. Then explain ideas, and then so initially students will remember, try to cram it, right? Classify, describe, discuss, then apply, execute, implement, solve. But for the postgraduate and for the rest of the life, whether you do PG or not do PG, for the rest of our life, every human being has to grapple with the top 3 layers also. So these 3 layers are nothing but higher order thinking, and these 3 layers are nothing but, the bottom 3 layers are nothing but lower level thinking. Ma'am, there was one more diagram also. Just click on the previous tab. This taxonomy got revised in 1991. Just click on that previous one, Bloom's taxonomy of learning. To the right of this, just cross this, इसको क्लोज करके इसके राइट में एक और डायग्राम था, ये जो एक विंडो सी आ रही है ना, इसको क्रॉस कर दीजिए, राइट में क्रॉस करके बंद कर दीजिए। एक रिवाइज भी टेक्सोनॉमी थी इसकी। गो डाउन मैम, स्क्रॉल डाउन। आई थिंक इट विल बी देयर और नॉट, जस्ट स्क्रॉल डाउन। इसके नीचे जाइए, कोई रिवाइज भी इन्होंने दिया है कि नहीं, ये सब एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। नो, गो बैक टू द प्रीवियस टैब, हाँ, क्रोम का टैब जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिखा हुआ है इसके ऊपर जो टैब है मैम,
to the left hand side. इसके भी left में. Yes. Now close this window. Vanderbilt वाला क्रॉस दबा के टॉप राइट में एक क्रॉस है इसमें. ब्लूम टेक्सोनॉमी जहाँ काले रंग से लिखा है उसके राइट में क्रॉस है. क्रॉस जो विंडो बंद करनी है मुझे ये वाली. नहीं यहाँ नहीं मैम, इसके राइट में, एग्जैक्टली राइट में, राइट साइड एकदम राइट, एक्सट्रीम राइट, एकदम इसके भी राइट में मैम. राइट देयर इज ए क्रॉस साइन ना. Okay, you type Bloom's revised taxonomy in that address, where that address you have typed, just type Bloom's revised taxonomy. That image will come. Yes, click on that. So what happened? One of his students, Anderson, and one more gentleman, what they said if learning is an active thing, why should the layer names be nouns? So they changed it to verbs. Just click on revise Bloom's taxonomy. Scroll down, ma'am. Is there any diagram? But even if there is no diagram, you can understand, just go down. The lowest one was initially, it was called remember. So what they have made it, just go, there would be a diagram there. So remember, तो same रहा, उसमें change नहीं हुआ. उसके ऊपर comprehension का बन गया understand, it's a verb. Then apply, same. Then they've made it analyze, evaluate, and create. So the top two layers got changed. So see, the top hierarchy, top learning level is creating something new, right? Creativity or creative thinking, and evaluation is nothing but critical thinking. So this is what CBSE tried to introduce. Sorry about this. CBSE tried to introduce critical thinking in 2008. And this still remains. Ma'am, open the chat GPT if you can. Everyone can open chat GPT in whichever machine they have. You can, if you don't want to show us the username, etc., you can stop sharing for the moment. Once you have logged in into chat GPT, then you can share again. Or anybody else wants to share, it's fine. Sir, आप geography पढ़ाते हैं ना? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Are you on laptop? Yeah. So, are you on chat GPT? Sir, no, I'm not. So, okay. Anybody, ma'am, Dr. Deepika, ma'am, are you on? Whenever you log in, you can just whenever everybody can try to log in. See, I don't have data who all teaches what subject, but whatever prompt we'll give, just follow the person who is going to share their chat GPT. And instead of typing what he or she is typing, you type your own subject area. Dr. Deepika, ma'am, are you going to share or someone else? Whoever has logged in into chat GPT. Anyone is welcome. Sir, I'm opening. No and then problem. I'll share, sir. Sure, ma'am, sure. We are all waiting. Till then, I will fill up with this. Research process everybody is aware of, right? This is nothing new in this slide. Identifying the problem. There, some tools in AI can help you here. If you are able to write to that tool what type of problems you have, it can probably be able to structure that. So structuring के लिए AI tools are good. Do not outsource your thinking to that. Do not let the thinking be done by these machines, right? Evaluating the literature. What AI tools can do at the best is summarize. To some extent, they can even also type keywords like critique this thing and all that. It will generate some critique of that, but do not blindly believe in what it is outputting.
human beings can never be, at least in the near future, in my lifetime, I will not see that machines will overtake human beings, right? Creating hypothesis, definitely many AI tools will be very, very helpful. Only thing, as human beings, we have to figure out whether it will make sense to test that hypothesis which it is creating, right? Research design, which design it is able to suggest, yes, it can be helpful. It can probably help you out. I'll probably share one diagram with you. Describing the population, I don't think this is what we know when we are doing research. Data collection, yes, there are AI tools coming up. Survey Monkey was always there. There are many other tools, and now AI tools are also will be helping. Do not artificially generate data. Please do not do that. There are n number of Excel functions available where you can generate artificial data for the research, because most of the journals now are even asking to upload your data so that they can test it out. And if you generate artificially through AI the data, AI will generate the data for you, but it can always be checked and you will have to take back your paper, and there will be a lot of consequences for all that wrong reporting, right? Data analysis, yes, there is a tool which I have not used a lot, but I came to know recently, I came to know recently that there is a tool called Julius. Julius is the Julius.ai, which is helpful in data analysis, but it is not free. I think very limited free usage is there. Even ChatGPT has got limited features of their paid versions. So, ma'am, are you ready with that? I was just filling up till you are able to. Yes, I am ready. Good. So I'll stop this films division ki bhet and then now over to you. Just share your screen, ma'am. Yes. So you have logged in, and I believe some more people would have logged in into their ChatGPT account. If nobody has, is there anyone who doesn't have ChatGPT? Then you can create your account. Thank you, ma'am. And just click on that ChatGPT, the drop down arrow which is coming to the middle. No, not here. Right hand side. Chat drop down arrow है ना मैम, उसके बगल में ChatGPT जो है टॉप लेफ्ट में ChatGPT के बगल में एक एरो है, करेक्ट? व्हाट डू यू सी? प्लस है और ChatGPT. बट एवरी डे I am not sure how many transactions, but some limited transaction they allow, which is governed by the ChatGPT plus. Otherwise, it goes default to ChatGPT. Okay, ma'am. So now just type, go to the prompt. Yeah. Yes, ma'am. Below prompt, message GPT. You have used ChatGPT, na, ma'am? Yes, sir. Just go to the, where do you write the prompt? Bottom, the text box. Yes. See, about a month back, when the ChatGPT 4.0 came, Sam Altman said something which I have already sent you. One of the document has a one page of his, I think, message which he has sent. He said he wants to give everything free. So this attachment, what you see, attachment was not there earlier in the, जो आप जहाँ आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके बगल में देखिए, वहाँ क्लिक करिए. So you can upload files, Excel files from here, PDF files from here, image files from here, and then you can ask very specific question related to that and it will give you answer. But if you ask 3-4 times, after that it will say your free quota has got over, and then it will switch back to the free account. Okay, ma'am. So Okay, that is something new. Okay, that every day you can use for half an hour or something. I don't know how many transactions. Here you type using Bloom's taxonomy. Don't worry about the spelling because it is intelligent enough to correct it. Using Bloom's taxonomy of learning, Bloom's revised taxonomy of learning. Using Bloom's revised taxonomy of learning.
comma, generate questions for each level. Generate questions for each level on the topic. Ma'am, you, whatever subject you teach, whatever you find it most difficult or whatever on the topic, then you put it in single quote, whatever you want to give. Should I press enter now? Press it, ma'am. Don't worry. So rest of you, if you have opened, you can type your own topic. Got it? Scroll down, man. It will give you all for all the 6 levels of learning, right? Yes, sir. You can again go back. You can revise that. Go to the prompt itself, the initial prompt. Just go scroll up, scroll up, scroll up slightly. हाँ, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिए. हाँ, वहीं पे जाइए जहाँ पे आपने क्वेश्चन टाइप किया था. हाँ, एडिट करिए इसको. जनरेट क्वेश्चंस कॉमा विद आंसर्स. यहाँ पे लिखा है ना जनरेट क्वेश्चंस कॉमा करके विद आंसर्स. क्वेश्चंस के आगे लिख दीजिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस. जनरेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस. जनरेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस. जनरेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस. with answers for each level on topics of topic supply chain management. और फॉर विच ऑडियंस. ऑडियंस क्या है मैम बताइए. ये जेनरिक सवाल हमने पूछा. जैसा जेनरिक आप सवाल पूछोगे वैसे ही ग्लोबल आंसर देगा चैट जीपीटी. तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. For विच ऑडियंस MBA यू वांट. students? फॉर एमबीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर. Second year. हाँ, सो फॉर सेकंड ईयर एमबीए इलेक्टिव कोर्स इन व्हाट सब्जेक्ट. Marketing? हाँ, फॉर एमबीए सेकंड ईयर मार्केटिंग इलेक्टिव कोर्स. जस्ट राइट. सो इट्स ए इटरेटिव प्रोसेस. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लर्न करना इटरेटिव प्रोसेस है. आप आराम से जाइए यूट्यूब पे, छोटे छोटे सर्च करिए हाउ डू यू बिकम बेटर एट लर्निंग प्रॉम्प्ट्स. यस, नाउ यू सेंड इट अगेन. So whatever it is generating, now we don't have to know the inside out how these LLMs work, but it's a probabilistic generation. It's a generative AI tool. Every word what you see is getting generated based on the probability. Lot of statistics has gone behind. Lot of PhDs around the world, top PhDs, they have created algorithms, etc. And how we as teachers can use is we can become a better students, but only thing is whatever it is generating as output, don't copy paste and don't start believing it 100%. Our load as teachers has increased many-fold by bringing all these incoming new tools, because we'll have to now check also. We have to learn these tools also. That is why such type of trainings are being organized. And it is very, very overwhelming for each one of us कि एक तो अपना सब्जेक्ट पढ़ो, स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, उसमें इतना चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, एंड फिर ये टूल समझो. बट वी डोंट हैव टू वरी. whatever little we are able to do, right sir? So I hope other attendees also would have typed and got something. मैम बट ये जो आउटपुट है इसमें से हमें ऐसा लगेगा कि जो इसने प्रोड्यूस किया है वो करेक्ट है. I agree, because these tools are getting trained every second.
So they are becoming better and better at a very faster rate. And below, ma'am, see, there are 5 icons are there. Just after this answer ends, there is a speech button also. I am seeing it. I think it can even read aloud what it has produced. Next to it is a copy thing. You can copy paste in some Word document. Below that is regenerate. So it will generate something new. Remember, it's a generative AI. The next time when you, so if you are happy with this output, always copy paste it as version 1 in some Word document. Otherwise, if you click on regenerate, it will produce something totally new. Previous one would be lost. And to the right, if you do not agree to this, you can give a thumbs down. So they are using this data to retrain their models. And to the last one, ma'am, drop down, click on that. See, 4O is the Omni model. Just click on that drop down arrow. So see, just 3 days back, I was also not aware. They have even come up with 4O mini. How many of you were aware that there is a model called 4O mini? O stands for Omni. I don't know what type of funny name or nomenclature they have. 4O stands for, it is not 40, it is 4O. O stands for Omni. Omni means voice, right? Audio, video, voice and, right? Vision, multimodal. Okay, Image, sir. voice, video. मिनी में उन्होंने थोड़ा सा डबल टोन दूध कर दिया, वीडियो हटा दिया इसमें से, टेक्स्ट रखा है इन्होंने. यू कैन चेक द डिफरेंस बिटवीन 4O and 4O mini. So currently, because you have typed it for the first time, it is giving you the results using the model which is more advanced than the freely available model. So you are getting the paid benefits, but limited benefit, because there are people who are paying $20 per day, so they will get more access. Whole day they can type on 4O. But because we are free user, we'll get few transactions. I don't know. There you can find out how many free transactions you can get. Make Right, sense? sir. Okay. Now, this is one simple thing. We just talked about Bloom taxonomy, and you can generate questions also using Bloom taxonomy. And it is going to exercise all parts of our learning, because as students, as faculty member, it is not easy for us to create questions also, right? How do you create question? That is also one of the document which I have. I will just paste yesterday, because you are here only. I'll just paste it one prompt which I took from one of the site. It's a very interesting prompt. Ma'am, are you able to see this? It's a very long prompt. Just copy it and paste it here itself. Are you able Have to you see? shared in message? No, in the chat only. Chat of Zoom, ma'am. I'll just check, sir. No problem. Do we need to paste that message into ChatGPT? Sir, the whole message I need to paste it here? It's not a message, it's a prompt, ma'am. Yeah, it's a reply actually. I Right. am also going crazy. There are so many types of prompts, and I cannot teach you prompt, but I'll tell you. मैं तो मतलब एक हम सबको ये काम करना है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना है, पागल नहीं होना है, बिकॉज ये टूल्स इतने ज्यादा हैं कि हमारी बची हुई उम्र भी छोटी है, वो कम पड़ेगी. To even make up, even understand 10% or 5% of this and be able to use them. Just type this and press enter and just watch what happens. I just learned this 2 days back. So what happened? We have created a prompt. You can go in detail. So it is now asking about, so every one of us, you, when you are typing this, don't type what madam is typing. Madam, अब आपको लिखना है Yes, अपना sir. occupation. So be as clear as possible. Suppose you have been teaching for 20 years of say, I have been academics teaching these courses for these many years. Because the richness of your prompts, the richness of your responses will take out the best response to this. That is what we have to learn. We cannot ask what is the color of the sky from ChatGPT. It's like wastage of the तलवार से काम ले रहे हैं, मतलब तलवार है हमारे पास और उसके हम सुई का काम ले रहे हैं. Rest of you also can please copy paste and see what
what it will give you after this. I was totally blown away by this one prompt. So should I press enter now? Ma'am, you have Yes. not completely answered. You have to tell about your occupation. Teaching which subject, ma'am? Including which subject are you teaching? Whom are you teaching? Okay. Supply chain management. I've been teaching MBA students. Need not be grammatically correct. Don't worry. I've been teaching MBA students. To MBA students subject since last 12 years, right? Full stop. What are your interest goals? Any challenge? Okay, interest ना भी supply chain में कोई interesting topic है आपका? Do you मतलब some particular concepts are interesting to you? Sir, supply chain logistics 4.0. So you just write. I am interested in supply chain logistics 4.0 concept. I am interested in logistic concept, right? Any goal you have while you teach, what is the goal you have for student, or forget this, forget. Any challenges you are facing, the challenge I face or the challenges I face are these. Whatever challenges you face while learning about this topic in this subject or while teaching the students, what are the challenges you face? I face these challenges. After that, put a semicolon and write your challenges separating by commas. 2-3 challenges you can write. And there is no right and wrong way of writing a prompt. You just write whatever. Keep getting better and better at writing prompts. The better prompts you are able to write, the better output it will give. It will surprise you. But always remember, whatever output you get, you have to always read it more than once, more than twice, more than thrice. Whatever, 1 or 2 challenges you can write. रोज आप लोगों की क्लास 4 बजे खत्म हो जाती थी, केयूर कुमार जी की। मेरी चलेगी आगे तक 4:30 के आगे, ठीक है मैम? Yes, sir. 4:30 तक तो मैं ले ही जाऊंगा। 2 दिन से मैं सोच रहा था 2 से 4 हो रही है क्या क्लास? 4 बजे खत्म हो जाती थी। 2 से मैम 2 आवर्स की है कि 2.5 आवर्स की? मुझे बता दीजिए, नहीं तो आप लोग पता नहीं परेशान हो जाएंगे। No, sir, it's 2.5 hours. ओके, गुड, नो प्रॉब्लम। तो हम 15 मिनट केयूर सर का भी ले लेंगे, ठीक है? So should I press enter now? रुकिए मैम। द चैलेंजेस आई फेस, द सब्जेक्ट इज क्वाइट ड्राई एंड बोरिंग, द टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है? नो प्रॉब्लम। Now press, and I hope, ma'am, just wait. Others are typing also or not? Are there few other people who have typed in their laptops? Sir, I have typed. So, ma'am, after this, we'll. So, if the answers are different, then I would request you to also share. Okay? Sure, sure. Ma'am. Now press, and I don't know what will come, but it will be definitely first time you will be seeing. Just press this and see what happens. See, it is generating the prompts for you. Example request, you can improve upon those prompts, but you can type this in the prompts itself. You don't have to write ChatGPT because we have written in the question, इसलिए वो ChatGPT लिख रहा है. Okay. Otherwise, you can just, can you create an engaging lecture in the fundamentals of supply chain? You can improve upon that. You can add on words to that.
It will keep Alexa, can I scrolling share down. my screen as I have mentioned something and result are different from this It because will be different, ma'am. Everybody's result, even if you type the same thing, it will give you different results because LLMs are based on probabilistic generation of yeah. words. Scroll down, ma'am. So course current development it has given you, then teaching method it has given you, curriculum development enhancement, all these use cases he has given you. It has given you. Now there is so much homework it has been. Our work has increased because of these tools. It has not reduced. Who says our work is reduced? Sir, seriously giving the answers which we have not expected that can give us these answers also. हाँ तो हमने क्या पूछा था ओरिजिनल प्रॉम्प्ट में जाके देखो यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज ए स्किल एंड करेंटली इन यूएस एक गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर इस तरह के प्रॉम्प्ट जनरेट करना एक आर्ट हो गई है जैसे आर्ट बनाते थे ना हाँ तो इतने बड़े बड़े और ये तो बहुत छोटे हैं देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेगा प्रॉम्प्ट्स मेरी तो समझ में नहीं आते वो चार चार पेज के लोग प्रॉम्प्ट देते हैं इतना फोकस होके आई कांट इवन फिगर दैट आउट आई एम ट्राइंग टू दिस Sir, प्रॉम्प्ट हाँ मैम रेनू मैम यू वुड लाइक टू शेयर yes, हाँ sir, I प्लीज can. शेयर Actually, तो before that, I just would like to ask one thing that in paid version or the free version, are we able to upload a research paper and see the crux of that like other softwares which we are using for the research tools? there are many other tools, ma'am. What do you want to do with that uploaded PDF? What do you want to do? Uploaded PDF and all, yeah. We'll do that. So allow. So you can share, ma'am. Renu, ma'am. should I stop sharing my No, screen no so that problem, ma'am. Multiple people can share. I have enabled that setting. Renu, okay ma'am, sir, just try to share. You don't have to stop sharing, ma'am. you're right sir. See, I love Zoom because it has kept on improving from day to day. Yes, ma'am. What did the prompt you gave initially? Occupation, etc. Sir, is it visible? Yes, ma'am. Yes, it is visible, ma'am. Go to the top. What did you ask? Um, What was the original prompt you gave? Yes, that was there. Then it asks you certain things, right? right. So you gave very assistant manager in management field. So it was slightly imprecise. You could have been more precise. It would have given you more precise output. Right. Now, just a minute more. See, there is one more prompt I'm writing, which is smaller one. Just type this, copy this, ma'am, and paste it in ChatGPT. This you can keep on exploring, keep on revising your prompts. This one more chat, वो chat में मैंने डाला है मैम. Are you able to receive it? Yes, sir. Yes sir. Let's give the same answers as right now. No, a little bit different. So do we think that the ChatGPT output is very unique? I was reading from the source from where I took this prompt. It says it is not actually, it is searching on, see, all these things have been trained on a database, right? Right. So the free version of ChatGPT was trained in up to January 2023. 4.0 version was the last I gathered information was April 2023. Maybe the 4.0 or Omni might have been trained 3 months down the line. So they are not connected directly to the internet. For internet, you can see same prompt you can copy paste in gemini.google.com. Now the difference in Gemini is free, but what Gemini has done, they have connected it to the net also. So they have it, their large language model has been trained on data
for a certain cutoff date that you can see. You can check out what is that cutoff date for Gemini, or you can just type it here. What is the cutoff date for ChatGPT 4.0? Just type, ma'am. Just type in the message. What is the cutoff date for ChatGPT 4.0 training data? Cutoff date for? Cutoff date for ChatGPT 4.0 training data, training database. So it's showing September 2021. 4.0, 4.0, 2021? No, it should be 23. Actually, it is giving the date for ChatGPT 4, not 4.0. ChatGPT dash 4.0. Okay. Acha, same thing you type in gemini.google.com. Just open a tab. What is the cutoff date? Open a new tab, ma'am. And that is the problem. Sometimes they might not be accurate. Create a new tab. Sir, may I ask you one question? Yes, please, ma'am. Sir, actually, you have written here, give me a business model for making money. Then I want to know whether we can ask question related to investment in the share market also, like in which shares Yes. I invest and all that. Yes, you can, but remember, it is not it's a algorithm. So whatever it generates, yes, people are using. And जो quant firms है ना, जो quant funds हैं, हाँ जी, हाँ जी. quant funds में algorithm ही चल रहे हैं. और क्वांट का जो एएमसी था, उसने बहुत पैसा दिया लोगों को पिछले 4 साल में. हाँ जी सर. राइट, बट जरूरी नहीं है कि आगे भी दे. उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी इन्वॉल्व है, मशीन भी इन्वॉल्व है. डेफिनेटली यू आर राइट. No, sir. Of late, we can see in messages like on Facebook and Instagram that we are using artificial intelligence for finding out different stocks which can make money. So I want to know how to use it. I have not used for stock investment these tools, but yes, we can. I can find out from. I know some people who are very good in who are hardcore finance professionals who also use artificial intelligence. So I'll find out from them. From where we can learn these kind of things. I'll Chitra ma'am, this group will remain after today's class also. This WhatsApp group. Yes, sir. So we'll keep sharing things, because I am a firm believer that the rapid pace with which these tools are coming, each one of us cannot. It is humanly impossible to know everything A to Z about whatever is happening. Each one of us has to do his or her own bit, and we need not learn the same thing. We should learn different things, and then we should periodically get together and share with each other what we have learned in the last week. Get into this habit of learning and sharing. That is how I define my, what does teaching to me means is, teaching is equal to learn plus share. That I've been believing for last 21 years, and it is more true now. Yes, sir. So ma'am, type gemini.google.com, not just this, gemini. ऊपर ऊपर लिख दीजिए. ऊपर एड्रेस लिखा है ना मैम, ऊपर एड्रेस में ही, एड्रेस बार में gemini डॉट. इसका पुराना नाम था बार्ड, BARD था ना ये. gemini.google.com. हाँ, नीचे वाला .com एंटर कर दीजिए. चैट विद जेमिनी.
have not हाँ, heard. योर डेटा तो आप नो थैंक्स, आप जो डेटा यूज करोगे वो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा कि नहीं होगा वो आप कर सकते हो, नो कर सकते हो उसको। चैट विद जेमिनी करिए, नहीं प्राइवेसी में चले गए आप। It was clicked by mistake, sir. प्रीवियस वाले टैब में जाइए मैम। अब हम लोग को थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो पूरा काम नहीं कर पाऊंगा अभी। हाँ, इस पे चैट विद जेमिनी पे क्लिक करिए और नो थैंक्स कर दीजिए। तो आपका डेटा जो आप अपलोड करोगे उसमें उसको क्या फिर बाहर आ गया क्या? हाँ सर, वो शायद एक से वो करना ही पड़ेगा। अच्छा, नीचे नहीं नहीं, स्क्रॉल करिए नीचे, पहले स्क्रॉल करिए, देयर इज समथिंग देयर। स्क्रॉल करिए स्क्रॉल करिए स्क्रॉल करिए, पहले आपसे कहीं पे चेकबॉक्स तो नहीं है, यूज जेमिनी लिखा है, नो थैंक्स करके आ जाना चाहिए था। इसको ऑफ ना भी करें तो भी चलेगा। कंटिन्यू, हाँ अब चेंज हुआ ना, आ गया। अब यहाँ पे आप वही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसका भी कट ऑफ डेट पूछ के देख लीजिए आपका ट्रेनिंग डेटा का कितना है। 4 नहीं है ये, जेमिनी डेटाबेस, जेमिनी ट्रेनिंग डेटाबेस। हाँ, जीपीटी तो कंपटीटर है ना इसका, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा लगाया है ओपन एआई में, जिसने चैट जीपीटी बनाया है। चैट को भी काट दीजिए और जेमिनी डेटाबेस कर दीजिए। तो ये लेट 2023 कह रहा है, ठीक है मैम, बट ओके। नाउ देर इज जस्ट ए मिनट मैम, वेरी Yes. वेरी, वी वर हियर, वी वर हियर राइट। रिपोर्ट राइटिंग के लिए जनरेटिव एआई कैन बी यूज वेरी वेरी fastly. I'll go through and then we'll go through tools. Somebody has raised hand. Who has raised? I myself has raised hands. Yes, sir. मेरा हाथ कैसे उठ गया भाई? Very funny. लोअर हैंड मेरे से ही, अच्छा इग्नोर कर दीजिए उसको, लोअर हैंड्स when I am sharing the control put somewhere else. Forget it. Okay. So these are diagrams which I have taken from different website. Aims and approach, choose the type of research, etc. I'll just skip through. Defining the topic. There are, how do you define the topic, right? So if you have written something, there is a tool called Word. I'll just defining the topic. There are certain tools where you can topic पे मैडम ने बहुत अच्छा बोला था, जीनल मैम ने, केवट सर ने भी काफी अच्छा एक्सप्लेन कर चुके हैं। Narrowing the topic means how do you bring it to more focused topic, and we are trying to learn even prompting. Maybe we cannot have a very generic thing, it has to be focused. Gathering background information, yes we can get lot of background Hello. we can get lot of background information using AI tools. Creating a research question is a possibility. Using ChatGPT and Gemini, you can write that these are the variables available with me given in this literature. These are independent variables. These are, and I am working with this context. Can you generate testable hypothesis or a possible research question? और उसके बाद आप अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ मैम, रिसर्च क्वेश्चन लिखा है, फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय थीसिस स्टेटमेंट? Thesis statement is something which a researcher is taking a stand on कि this is what I am working on and this is what I am trying to do. Thesis statement. There are free, I would not now
Just a minute. You can just type this word thesis generators on the browser and you will get thesis generator. What they will do, they will have 3-4 text boxes. They will ask you what is the topic on which you are working. Then the first question they'll ask, write a sentence on what is it that you truly believe about this. Then second sentence, what you truly believe about this topics. Third sentence, what do you think others will oppose about this topic. Fourth sentence, what do you think someone will again oppose about this topic. And then you press enter. So it will generate a thesis statement. And it's a very simple tool, free tool. What it actually says that you are actually trying, while we are doing a research, we are trying to say something that this is what I am trying to do. This is what I am trying to prove or disprove, right? So when you speak in front of an audience of 43, 44, some of them would believe it, some of them will disbelieve it, right? They will have, so not, it is not like you are saying that thesis statement is not that sun rises in the east. Everybody has to believe it because it's the truth statement. So you have to take a stand on something which may or may not be true, and you are going ahead with your hypothesis and trying to prove it. That's what is the research, right? And then evaluation sources, etc. So that we search. Then citation of sources we already have. I hope everybody is using, and I think ma'am also has already mentioned Mendeley. I used in my thesis, and Jotero is now free because Mendeley has been bought over by Elsevier. I hope everybody is maintaining their downloaded PDF literature review documents in either Mendeley or Jotero. Is that right? Nobody is doing it manually? Yes, sir. No one is doing manually, right? Sir, I'm not aware of these Mendeley and Zotero. Please. Are you, Minu ma'am, how many years have you been teaching? Sir, actually, for the past many years, I'm at home because my children were very young. Okay, Now, so again, I'm trying I from. don't have myself many papers, but you must have definitely some papers. No, sir, no. You don't have any paper, research No, paper? no, sir, because there is too much time gap. Before this, I was working with Axis Bank. No problem, ma'am. I also started working only after 14 years I came in the industry, and my PhD came recently. So I'm also trying to write as many papers I can in the remaining years in academics. So don't worry. But whenever you download, anybody who's using Jotero and Mendeley, how many of you are using? Sir, I am attending this FTP because I want to write a paper. I have to start from somewhere. Sure. So, ma'am, can you share, because then you are the fittest candidate. Are you on laptop? Yes, sir. Can you share your screen? Okay, Neha ma'am says she's using. So we'll come back to this later on. Just share your screen, ma'am. And in your laptop, you have any paper with you, literature paper, which has caught your eye and you have downloaded it. Sir, I have shared the screen. Ma'am. Now you click a tab, one tab, and go to something which I call the first tool, which I'm going to tell you is about lit maps. Just type LITMAP, lit maps, press enter. Click on that. Click on that link which has already come. Below that, आ गया ना link नीचे. Lit maps, literature review assistant. Just click on that. Yes. Now I hope everybody has made a email ID exclusively to be used in these AI tools. Correct? You have an email ID, ma'am? Yes, sir. Okay. Even if you don't have, if you have it, then it is good. Then you can log in into this. Sir, may I log in with the net? That you can, if you want to log in, you can log in. Otherwise, At this ID, actually, I don't remember the name of the ID. Actually, just a minute.
Okay, different IDs are there. Okay. This is a new ID which you created for use in Yes, sir. Yes, sir. AI. Okay, very good. Very good. Whatever you are comfortable with. You teach chemistry? No, no, sir. Management, financial management. Yeah, I saw this periodic table, so This periodic, sir, of my son. He's a medical student. okay, okay. From How many of you have used lit maps? Lit maps is something which is, see, there is a lit maps, there is a elicit. I'm just giving the name. There is a connected papers, right? And there is a free tool, insightful. Insightful is free. All the others are not free, but lit maps is the leader amongst these. These tools are excellent for literature review. Remember the times we used to go to the libraries in 1995, my PhD MTech guide said, do not show me your face for next 3 months. Every day morning 8 o'clock, you should be in the library till evening 8 o'clock. The only job is to look out for all the papers on handwritten character recognition. All the bound volumes, I took about 3 months with 40 papers. There were no downloading facility. I had to physically Xerox it and read them 3 times and then go to him after reading 40 papers in 3 months, 3 times. And then he said, then I'll talk to you about the research topic. Okay. Ma'am, you have any PDF document with you in your research में जो आपको interest आपने कोई download किया हो which is interesting to you? No, sir. You don't have any topic you are interested in? Whatever you type, just type any author name you know of. No, no, sir. Actually, I asked many people. Okay. They gave me just general, Okay, no general problem. So anyone else in the audience, Dr. Deepika, would you like to again join in? Sir, you want me to open this lit maps? Yes, lit maps and put a PDF document which you have. आपने research करी हुई है, आपके पास कोई ना कोई अच्छा पेपर होगा, उसको खोल के उसका टाइटल इसमें डाल दीजिए. Actually, my laptop got formatted after I've completed my PhD. Okay, anyone else in the audience? Any research scholar? Any faculty member who is currently writing a paper, writing in the literature review stage? Anyone out of 11 research scholars? Renu ma'am, you have papers? I have, sir, but actually, Litmap is I'm not able to open it up in my. I don't know. I'll just want to share first. Then you can just guide me for this. I'm not You're not able. able to open? I don't know why. I just created one login in the morning No itself for problem. this. Even without login, Okay. just type whatever author name you So remember or any title of the paper. I'll be through with this like from this page to okay, and from where I need to upload. Actually, I'm not able to see that. Acha, this is laptop Yeah, only. this is the problem. Yeah, this is on the laptop only. Last time I did it, but not this time. I'm not able to. Because that should Chitra not ma'am, be. you can share it up. Chitra If ma'am, you. are you there? Sir. Sorry to trouble you, ma'am. Turn नहीं लेने दे रहा मैं किसी को. No, I was to just looping into that, but I was not. Why this happened to me today? I don't know. Sir, do you want to share my screen? हाँ, please, ma'am. I want everybody because I got inspired by Dr. Keyur Kumar. That वो सबसे काम करा रहे थे मेरे को. मैं भी आंसर दे रहा था क्योंकि मैं तो स्टूडेंट की तरह ही बैठा था ना. हाँ, yes, sir. बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया क्लास But था. sir, that actually made the session very interesting and बहुत ही बढ़िया, interactive बहुत ही also. बढ़िया. He didn't lose calm. That is, I learned a lot. See, as a teacher, sometimes our students can be up on our nerves, and how do you still remain calm? That is something which I will be in touch with him. Such a nice person. He So has as a his own teacher vision. also, we always have something to learn from others. Very true. We are students. That is why we became, I think, teachers. Yes, sir, Friends that's for life. true.
Means once in a time now I have heard something that a student can learn without the a teacher, but a teacher cannot teach without learning. Very nice. Yes, who is sharing? It maps. और जब तक बाकी लोग बोर हो रहे हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, what I'll do is I'll send you that PPT straight away, which I have. This is not my PPT. This is the PPT by Madam Lekha Bajpayee. She was kind enough. I took her permission just around 1:30. I'm just going to meet people, so I'm just sharing this. This is about, and I'll put it in that group itself. That GPT से डाउनलोड होगा नहीं होगा, I don't know. Because जो मोबाइल, हाँ मैम, आपके पास कोई भी पेपर है, चित्रा मैम, you have any paper on your desktop, laptop which you think you like it? Okay, sir. I will share. No, you don't have to share. You just open it up and you just type the title of that paper or DOI or author name or whatever you want. आपको भेज दिया। Okay, okay. पेपर भेजा आपने किसी को? ये टाइटल टाइप कर रही है मैम? I'm writing the title of the paper. Okay. Two behavioral biases. पेपर सर्च नहीं किया इसने? पाकिस्तान का इज इट? सी वन थिंग इज मैम, हाँ आ गया मैम, आ गया नीचे, आगे सर्च हो गया ना? हाँ हो गया करेक्ट. ऑलवेज चेक दीज पेपर्स whether they are, remember madam has very clearly said on day one, ABDC listing, right? ABDC list is free. So see, the beauty of this is lit maps is I have just put one paper that becomes a seed, and you can see that that paper is gray in color map, right? You can see this map. Now in the middle bottom you will see there are three icons. One is called date, one is called site count, one is called ref count. Are you able to see? Bottom middle page, right? So date means left to right. So left hand side you see all the older papers, 1998, 2014, and the right hand side you have the latest paper, 2023, correct? Bottom to up is site count. So papers which are below, they have lesser citation. Paper which are above, they are having more citation. Are you getting that? And the third icon is reference count. That is nothing but the size of the circles. If bigger circle is there, that means more references are there in that paper. References is nothing but at the end of the paper you have references. So you have 4 quadrant. Left side is early papers, right hand side is more number of papers. Bottom is lesser citations, top is more citation. So ideally we are looking for the latest paper with most citation. That will be on the top right corner. Even if it is not there, so what you should do is, you can take a trial of this lit maps. Each one of you should take a trial map, create an account, a new email ID exclusively for AI, and use a free features. And for Indians, I think for academics, they have made a 75% discount also. It's very cheap, but that is only if you find it very good to use, right? And on chat, I have already mentioned, Elicit is also very similar to this. Connected paper is also in similar to this.
any, so just drop down, ma'am. Any paper, okay. This same paper, you click on that gray color circle. Click on that gray color circle and copy the name of that. Copy this whole name, you can copy. No, just पहले highlight कर लीजिए, उसे select कर लीजिए. हाँ, इस पे click कर दीजिए, इस पे click करिए मैम. इसी पे click कर दीजिए. So it will take you to the origin of this. See, this is MDPI. Now, I will suggest MDPI may not every journal is good paper. So please try not to invest your time, effort, and obviously don't pay money to the journals for getting your paper published. I do not know if this is a ranked journal. Ranked journal means if it is have any, जैसे मैडम ने day 1 पे कहा था कि do not read category C papers. Even lower मतलब even in B categories में there are some journals who are down below in B. They can any day go into the C category. So always try to read and download only papers who are published in good journals. Otherwise, our learning will get biased because of these easier papers. So MDPI, I am not sure whether this journal will find itself in ABDC. Is it okay, ma'am? Okay. Just type insightful.xyz in one more tab. Insightful. Just copy this title first. Do behavioral. Just copy this title in the previous tab. Copy this title, whole title. Just copy. Control C. Copy. We'll use this only. And come here and type insightful. Type in the top, ma'am. Why do you type here? Type in the top address जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे INCITE insightful.xyz. Click on this. Now this is a free tool by an Indian. Type on the paper title there. Search for the title of a paper. Type there, ma'am. Paper title जहाँ लिखा है left side में. Left side में. And वो जो सर्कल से बना है उस पर टाइप कर एंटर कर दीजिए. कंट्रोल V एंटर. पेपर पे क्लिक कर दीजिए मैम. ये ऊपर पेपर टाइटल है. यस. नाउ सी व्हाट हैपेंस. केवल एक ही ने साइट किया है. नहीं, साइटेड बाय 1 person. Okay, this paper is citing so many people. So always choose, you should have a list of seminal papers. 30-40. मैडम ने तो बहुत अच्छे से. Scroll down, ma'am. Scroll down. This is a map. Scroll down. Keep going down. How many people have cited? See, analysis of behavior biases in investment decision making. 29 people have cited. Keep going down. Similar paper. इसी paper से मिलते जुलते papers हैं. Go down. Keep going down. Most important papers also it is coming. It is created by Insightful only. Most important not that सब लोग कह रहे हैं, बट इंसाइटफुल का जो एल्गोरिथम है वो कह रहा है. रिव्यू पेपर्स निकल के आ रहे हैं. कब पब्लिश हुआ, कितने लोगों ने साइट किया है. डिटरमिनिंग सैम्पलिंग साइज. सो यू विल गेट कनेक्टेड. के मतलब ये नहीं है कि एकदम नियर बाई एकदम सिमिलर है. इट माइट बी डिस्टेंटली रिलेटेड ऑल्सो, बट इनके अपने एल्गोरिथम्स हैं. कीप गोइंग डाउन. What I am trying to say is taking literature, doing literature review has changed a lot in the years. Even in last 4 years पहले हम क्या करते थे वो अब change हो गया है. Now literature review will take lesser time than before, but you will be having access to all these visual tools. Litmaps provides you, suppose you have done downloaded 10 papers, you can upload that 10 papers through Litmaps, and immediately it will create a map and it will show you the latest paper which you have forgotten to read. It will be on the right hand side. And suppose it is on the right hand side and top, you will know that it has more citations. So I should also include it in my literature review. Are you getting what I am saying, ma'am? Yes, sir. Now, open one more tab.
and type a word called research rabbit. Research rabbit is a free tool like Insightful. Free tool means there is no paisa involved. It is free for all time. Search rabbit. हाँ, चूहा, वो रैबिट तो क्या होता है, खरगोश जो एक बिल बना लेता है ना, रिसर्च रैबिट। इसमें वही पेस्ट कर दीजिएगा अभी, डिक्लाइन कर दीजिए नीचे, और नीचे जाइए, चैट बॉक्स कुछ है इसमें, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, इसमें भी लॉगिन करना पड़ता है क्या? लॉगिन कर दीजिए मैम, आपकी कोई ईमेल आईडी हो, अभी स्टॉप शेयर करके फिर लॉगिन कर लीजिए। हाँ, स्टॉप शेयर कर दीजिए, फिर लॉगिन कर लीजिए। Sir, Sarigama will share his her screen because she is already having an account. Who is having? Sarigama. हाँ, सारिका मैम, are you there? Yes. हाँ, please share that research rabbit you have used. Yes, sir. I have used. Is my screen visible now? Is it No, visible? Sarika ma'am. No, no, no. No, Okay. ma'am, it's not visible. Okay, wait a while. ये है ना शेयर शेयर में आप कहाँ Is it visible now? Yes, ma'am. Oh, sorry, I was muted. Yes, ma'am. Please click on new collection and type BCIPS. Something you just type BCIPS. अनटाइटल नहीं, कोई भी नाम दे दीजिए मैम, डे 5 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, या ओके कर दीजिए, अनटाइटल नाम से ही बना देगा वो। सेंटर में ओके कह रहा है, ओके ऑलरेडी एक बना हुआ है, कैंसिल कर दीजिए, वो कैंसिल दिखा रहा है। I think it is not working cursor properly. नहीं, बीच में सेंटर में वो ओके कैंसिल का बटन आ रहा है मैम। Okay, okay. Got it. अब So यूनाइटेड can I open the earlier हाँ, collection? वो भी आप अर्लियर बता के भी समझा सकते हैं, बिकॉज यू हैव यूज्ड इट, otherwise I was just wanting to give a demo to people. You can add any paper there or you can show the covid one. Yes, आपके पास ऑलरेडी है ना कोविड वाला, इसमें कुछ पेपर नहीं ऐड किया आपने? Let me check. अच्छा, अनटाइटल में एक पहले वाला में एक ऐड है, कोविड में 0 है, इसमें एक पेपर है, ट्रेंड इन द ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट? Yeah. हाँ, तो उस पर क्लिक करिए पेपर पे मैम। तो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट पेपर, it will keep going to the right hand side, it will give you the abstract, then it shows how many references that paper has. बहुत कम रेफरेंस है मैम इस पेपर में, वो छोटा सा है क्या? यूक्रेनी Yeah. कहाँ से लेकर आई हैं आप पेपर? Actually, I was just doing trial. हाँ हाँ हाँ, तो what this does is, this is a free tool, you take, all of us should download, access at least the 5 to 10 well-known papers in our respective area of research. It is true for all of us, including researchers and practitioners.
or academics, please look for Ask Anybody and search for good papers and keep them in a folder and upload it to this Research Rabbit, and then keep going to the right hand side. वो click on all references मैम, then रेड कलर में जो 8 सर्किल दिखा रहा है, 8 सर्किल जो है, और इन सब के ऊपर छोटे छोटे यूट्यूब बने हुए हैं. मेरे पास टाइम की कमी पड़ जाएगी, रिसर्च रैबिट के ऊपर छोटा छोटा यूट्यूब बना हुआ है. हाँ, इस पे क्लिक करिए तो ऑथर के बारे में दिखेगा, फिर ऑथर ने किसके साथ लिखा है ये राइट में चलता चला जाएगा, और लिटरेचर रिव्यू में के लिए ये बड़ा एफिशिएंट है. इसके डायग्राम्स को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डायग्राम में यूज कर सकते हैं आप चाहें तो अपने लिटरेचर रिव्यू में. राइट, ठीक है मैम. अब मैं एक और टैब क्लिक करिए मैम, आई विल गो स्लाइटली फास्टर. एक और टैब क्लिक करिए, SCITE, साइट असिस्टेंट टाइप करिए. SC मैंने चैट में लिख दिया है, असिस्टेंट, SCITE, ASSISTANT, साइट असिस्टेंट, सॉरी. हाँ, क्लिक करिए. नाउ दिस इज ए रियली यूजफुल टूल. क्लिक ऑन दैट साइट असिस्टेंट. first one? यस. Yes, मुझे sir. पता नहीं लग रहा कितने लोग सुन रहे हैं कितने लोग नहीं. चलिए, 2 लोगों से तो बात हो रही है मेरी. नीचे रिजेक्ट ऑल अननेसेसरी. अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछना है, और क्वेश्चन पूछने की आर्ट आप लोगों को विकसित करनी होगी. मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं आप लोगों को, Mhm. Yes, sir. में एक डॉक्यूमेंट जो है शेयर डॉक्यूमेंट, उसमें एक है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग जो 1.0 से शुरू हो रहा है. राइट, मैंने जो दिए डॉक्यूमेंट उनको भी एक बार रेफरेंस कराना होगा. ओके, आई विल गेट इट डन. इसमें कोई क्वेश्चन मैम जो आपको ट्रिबल कर रहा हो रिसर्च में, आप टाइप करिए वट एवर यू वॉन्ट लाइक टू. Question as in, I mean रिसर्च क्वेश्चन के regarding फॉर्म this. में कोई भी क्वेश्चन पूछिए आप, कोई भी जो मन में आ रहा हो. इट शुड एंड विद क्वेश्चन मार्क. So it could be like how technology is affecting the consumer behavior. हाँ, प्लीज टाइप दैट, प्लीज टाइप दैट. सारे जो AI टूल्स एक नए रोज पैदा हो रहे हैं. मैंने अभी अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा है, जो मैंने खुद देखा अभी 1 घंटे पहले. उसको मैं साइट देख के मुझे याद आया. पिक्स मुझे नहीं पता, इतने सारे टूल्स हैं मुझे पता ही नहीं. एलिसिट मैंने यूज किया था, बाकी जो टूल है पता ही नहीं. रोज तो नए नए टूल्स हो रहे हैं. वी कैन नॉट कोप अप विद दैट, सो मच इज गेटिंग जनरेटेड. एक और चीज मिली थी, वो भी सब. एक और है साइट, एक और टूल था, अच्छा है, वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ. टाइप किया आपने क्वेश्चन, तो ये क्या कर Yes. रहा है, ये बड़ा यूनिक टूल है अपने आप में. इतना यूनिक टूल है. आपने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत ग्लोबल क्वेश्चन है, फोकस्ड क्वेश्चन नहीं था. तो फर्स्ट लर्निंग इज ईच वन ऑफ अस हैज टू लर्न टू आस्क फोकस्ड क्वेश्चन, मोर प्रिसाइज क्वेश्चन. प्रॉम्प्टिंग का ही इनिशियल, मतलब जब तक कि वॉइस बेस्ड नहीं हो जाते ये सब टूल, जो कि बहुत जल्दी हो जाएंगे. अगर यही कोर्स अगर 1 साल बाद होगा तो उसमें आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन जस्ट स्पीक आउट योर क्वेश्चन एंड इट विल गिव यू द आंसर. I think it is generating literature review automatically. नहीं, it is what it is doing is, so see, it will, because all of these are using Gen AI tools, right? But the Right. beauty of Site Assistant is, it is not, the Chat GPT and Gemini will never ever give you right references. Right. ये ध्यान रखिएगा कि चैट जीपीटी, जेमिनी, ये एलएम्स है वो नहीं देते. तो अब ये कहाँ से है, ये भी तो चैट जीपीटी और एलएम कौन सा यूज कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बैक एंड पे एपीआई वही यूज कर रहा है, बट उसको फाइन ट्यून किया गया है रिसर्चर्स के लिए. इट एक्चुअली गिव्स यू वैलिड रिसर्च पेपर्स. और राइट में देखो सारे रिसर्च पेपर्स हैं. और अब आप जो ये रुशदियन दिख रहा है ना बीच में, देखो सेंटर में रुशदियन के पास वो कर्सर लेके जाओ, तो व्हाट इट विल इवन शो दैट कि उस आर्टिकल के अंदर कौन से लाइन से उसने ये चीज लिखी है जो लिखी है बाहर. समझ रहे हैं आप? Right, sir. और नीचे जो 4 बटन दिखा रहा है, हरे रंग का सर्किल, और वो वहां पे जब जाओगे कर्सर में तो क्या दिखाएगा, लेफ्ट साइड में देखो,
सब 0 0 0 है, मतलब ज्यादा लोगों ने इस पेपर को, लेफ्ट साइड में आइए, इससे लेफ्ट में ये नंबर ऑफ सपोर्टिंग है, ये नंबर ऑफ पब्लिकेशन साइटिंग दिस वर्क, 0 पब्लिकेशन है, तो हम इसको क्यों यूज करें? फिर राइट में जाइए, कितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग इसके अगेंस्ट में है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जो इसके अपोज कर रहा है, ये बड़ा यूनिक फीचर है इसका। तो साइट असिस्टेंट में आप इसके क्वेश्चंस को बेटर तरीके से करेंगे तो ये सारे रेफरेंसेस भी देगा, एक्चुअल रेफरेंसेस, और उसमें से आप लोगों का, हम सबका काम क्या है कि हम बी कैटेगरी एंड एबव वाले जर्नल्स को यूज करेंगे। कभी भी किसी भी आउटपुट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है मैम, करेक्ट। राइट साइड में स्क्रॉल करिए जरा, हम देखें कोई ऐसा है पेपर जिसको ज्यादा रेफरेंस मिले हो। नीचे जाइए, स्क्रॉल करिए नीचे, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, नहीं हो रहा है स्क्रॉल? स्क्रॉल नहीं हो रहा मैम? Doing it. Scroll down नहीं होगा। Scroll down क्यों नहीं होगा? यहाँ है। ये आ रहा। No sir, I think अच्छा, एक और है मैम, एक और टूल टाइप करिए जल्दी से, yes sir. साई स्पेस, SCI स्पेस, साई स्पेस, SCI साई स्पेस, SPACE, एंटर, साई स्पेस, जस्ट एंटर, First one? हाँ, टाइप इट, क्लिक इट, क्लिक इट, हाँ। तो साई स्पेस तो प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन इसका वेबसाइट है typeset.io, कंटिन्यू करिए। हाँ, इसमें टाइप करिए वही चीज जो क्वेश्चन आपने टाइप किया था वहां पर। Everybody should be having their own research questions in their mind, then only you can use these AI tools. Now what it does is, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अच्छा ओके, ये भी जो भी है ये This उन is the पेपर्स, yes. पेपर से आपने जो ये साइज स्पेस इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर, वेरी गुड सॉफ्टवेयर, एंड इसका भी फ्री वर्जन आप, और इसमें पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। somebody was asking कि पीडीएफ को अपलोड करके, रेनू मैम शायद वर आस्किंग, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, एंड द मोर स्किल्ड वी बिकम in asking questions, the better these tools will help us in achieving what we would like to achieve. Yes sir, I have asked a question and further हाँ प्लीज। और देखिए देखिए देखिए, एक मिनट रुकिए रुकिए, देखिए आपने जो क्वेश्चन लिखा ना, तो ये टूल ये भी मान रहे हैं कि इंसानों को, ये मशीन ये सोच रही है कि इंसानों को क्वेश्चन पूछना नहीं आता, तो वो सजेशंस भी 3 दे रही है, देखें आपने। तो yes sir. अगर आपके जो एक्चुअली में जो आप पूछना चाहती थी, वो आपने जो लिखा है वो ठीक है, कि जो 3 इन्होंने दिए हैं वो ठीक है, जैसे चश्मा वाला टेस्ट करता है ना कि ये ठीक है कि ये ठीक है। Yeah. अब आप This इसमें देखो 3 से better. कौन सा आप यूज करना चाहते हो, इट इज मोर प्रिसाइज, सो दैट इज व्हाट एवरीबॉडीज जॉब इज। इसलिए कोलेबोरेशन इज मोर एंड मोर रिक्वायर्ड टू डील विद दिस बीस्ट कॉल एआई टूल्स। कौन सा आप इस पे सेलेक्ट करो, क्लिक करो, तो ये बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन हो गया, करेक्ट। इतना बड़ा Yes. क्वेश्चन हो गया कि उसमें ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में आ भी नहीं रहा है। उस पे आप लेके जाओ, माउस लेके जाओ, तो वो शायद पढ़ के सुनाएगा पूरा, ऊपर पढ़ के मतलब दिखाएगा, ऊपर कर्सर वहीं टेक्स्ट बॉक्स में ले जाओ, ऊपर ऊपर जहाँ पे वो क्वेश्चन लिखा है, हाउ डू हाँ. शायद पूरा दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा रहा, नो पूरा प्रॉब्लम। तो जो भी आपने क्वेश्चन लिखा उसको, ये 5 पेपर, वहाँ पे 5 पेपर के बाद ड्रॉप डाउन एरो है, नहीं. Right. आप टॉप 10 भी कर सकते हो, लेकिन वो कहता है ये प्रीमियम में मिलेगा, ठीक है। फ्री में हमारे लिए 5 पेपर काफी है। अब नीचे जाइए, आप जरा स्क्रॉल करिए नीचे में, नीचे स्क्रॉल करिए, ये देखिए इसने पेपर दिए हैं,
थोड़ा ऊपर रहिए, थोड़ा ऊपर रहिए। अब देखिए, इसने कहा कि पीडीएफ अवेलेबल है कि नहीं, वो चेकबॉक्स पे लिख सकते हैं। तो पीडीएफ अवेलेबल है तो ओपन एक्सेस ही देगा। मोर फिल्टर्स पे जाइए मैम, मोर फिल्टर्स। Sorry, I पर have ही मोर फिल्टर्स है। clicked. कोई बात नहीं, ये फ्री में गड़बड़ करता है, लॉगिन भी नहीं किया ना हमने। Right. तो लॉगिन करने के बाद ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। इस पे लॉगिन कर लीजिए मैम। आपका अकाउंट बना है क्या इसमें? No, sir. तो आपके पास वो ईमेल आईडी है जो एआई टूल्स के लिए यूज़ करती हैं आप? साइन अप कर लीजिए। Yes. Yes. वही वाली ईमेल आईडी यूज़ कर लीजिए आप। चाहे स्टॉप करना हो तो स्टॉप कर लीजिए, शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। मैं कर देता हूँ, मैं फिर आ जाता हूँ। और Please stop. राइट नाउ वीवर, आप जब तक मैम वो कर रही हैं तब तक मैं कुछ ये फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाता हूँ। एक टूल है राइटिंग के लिए। अब हम इधर राइटिंग के लिए जो हम लोग कहते हैं, एक है राइटफुल, राइट, Down. और ये सब आपने नाम सुने होंगे। क्विल बॉट, राइट, राइटफुल, क्विल बॉट एंड जेनी एआई। heard of these names? These are text generation tools। ये जो मुझे तीन पसंद है। और जहाँ तक हम ये लिटरेचर रिव्यू में, एक और टूल अभी अभी मैडम साई स्पेस में लॉगिन बना रही हैं, दैट इज अ वेरी गुड टूल, साई स्पेस। देर इज ए very good tool called, are you able to see what I am typing? Consensus। No, sir, we are not able to see what you are typing. नहीं, मेरे को तो दिख रहा है See, स्क्रीन पे। it's visible, sir. हाँ, मैंने लैपटॉप पे अपना रखा हुआ, आई कैन सी व्हाट यू ऑल शुड बी सीइंग। मैंने दो सिस्टम से लॉगिन किया ना मैम। आर यू ऑन मोबाइल? No, no, sir, laptop, but I can see shared screen only. What ब्लैंक you स्क्रीन आर यू सीइंग? No, shared screen. Actually, वो AI. मैम ने शेयर स्क्रीन शेयर किया था and that's why she is not able to see what एक you are मिनट, एक typing. मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप शेयर, नोबडी इज शेयरिंग नाउ। अच्छा अच्छा, हमने मल्टीपल शेयरिंग अलाउ कर दी है इसलिए। ओके ओके ओके। व्हाट आई विल डू इज होस्ट टूल्स। सुरेश भाई, ये मेरा कप भी ले जाना। ये लो। अब मैं शेयर करता हूँ। नाउ आर यू एबल टू सी? बट वो उड़ गया Yes. है सब, कोई बात नहीं। Hmm. what I was saying, there was a tool called Quillbot। अब दिख रहा है मैम? Yes, sir. There is a very good tool, and the beauty about that tool is that is made by, Israel country, Yes, sir. Israel country is technologically very, very savvy. And I was really surprised. This Rightful tool is one of the cheapest tool available. I think, I don't know, maybe 10 pounds or something. It is the cheapest tool। ईयरली सब्सक्रिप्शन राइटफुल का सबसे कम है। बहुत ही प्यारा टूल है, बहुत ही प्यारा टूल है। एंड क्विलबॉट इज देयर, एंड देन जेनी एआई। heard of this Jenny AI? Jenny.ai, I think. Jenny.ai. These are all three tools are Quillbot and Jenny AI are generative tools, and Rightful tool is something like Grammarly। Heard of Grammarly ना? मैडम ने बताया भी था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रामरली की तरह है। और राइटफुल टूल, अभी मैं जब आएंगी मैम, जब आएंगी तो आई विल Yes, sir. फाइंड एनी। I have signed in. ओके मैम, तो आई विल स्टॉप। I share. यस मैम, प्लीज। So you have signed now. Just go down, click on more filters. In the middle, you have more filters. टॉप टीयर पेपर्स के राइट में, करेक्ट। नाउ उसमें पब्लिकेशन टाइप में जाइए मैम।
देयर यू कैन टाइप जनरल आर्टिकल चाहिए कि बुक चैप्टर चाहिए कि बुक चाहिए कि पेटेंट, जनरल आर्टिकल पे डाल दीजिए, आप क्लिक कर दीजिए, सपोज दैट डिपेंड अपॉन योर चॉइस। जर्नल्स पे जाइए, जर्नल्स अगर आपको चुनने हैं तो जर्नल चुन सकती हैं आप। ऑल दीज आर लॉट ऑफ ऑप्शन। साइज स्पेस इज वन वेरी गुड टूल, very good tool. Now how what benefits it give? Go to the right hand side, ma'am. See, suppose there are 5 papers on the left hand column, then it culls out, it brings about the insights from there. You can add more conclusions also. You click on conclusion on the right, you can add more columns. Click on conclusions, click on results, go to the right, click on literature survey. तो जो हम लोग मैनुअल करते थे, एक्सेल में करना पड़ेगा हमें। अभी भी हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमें बनाना तो पड़ेगा ही, पेपर तो पढ़ना ही पड़ेंगे। दीज टूल्स विल ब्रॉडली गिव यू लिस्ट। एंड अभी तो हमने केवल क्वेश्चन लिख के, ये कहाँ से ला रहा है ये पेपर? देर इज ए साइट कॉल, पेपर कहाँ से लाता है? आप किसी पेपर पे क्लिक करो मैम, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पे, so it will take you to that paper, but the search engine it is using is इस पे क्लिक करो। हाँ, now see, the moment you click on that paper, SciSpace has lot of features. Chat with paper, देखिए नीचे chat with paper लिखा है मैम, below ऑरेंज रंग में, स्क्रॉल डाउन, स्लाइडली स्क्रॉल डाउन, लेफ्ट साइड में। हाँ, चैट विद पेपर, नीचे देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पेपर लिखा है ना, Yes. पे क्लिक करिए तो वहाँ आ गया क्वेश्चन, Yes. उसका एब्स्ट्रैक्ट समझाएगा। फिर और देखिए 12 और क्वेश्चन लिखे हैं राइट साइड में, देखिए एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के बगल में प्लस 12 क्वेश्चन लिखे हैं। रेनू मैम पूछ रही थी शायद चैटिंग के लिए, नीचे देखिए, नीचे Explain. आप ऑनलाइन थे इसके तो राइट में देखिए मैम, ले आना, राइट में चेक प्लस ले 12 आना, लिखा है, यहाँ क्लिक करिए। चेक हाँ, इस पे क्लिक करिए, देखिए इतने सारे इसने दिए हुए हैं कि कंक्लूजन पेपर से बताओ, रिजल्ट्स बताओ, मेथड्स बताओ। इससे मिलता जुलता एक और सिमिलर सॉफ्टवेयर है, चैट पीडीएफ डॉट थिंक डॉट कॉम, चैट Sir, when पीडीएफ। I have clicked on conclusion, so हाँ this हाँ, इस पेपर से निकाल रहा the है, करेक्ट result which I got. करेक्ट। तो ये जो, अब देखिए फिर नीचे क्वेश्चन दे रहा है, और इट्स ऑल्सो वेरी गुड टूल। अब इस टूल ने लेफ्ट साइड में देखिए मैम, लेफ्ट साइड में सबसे जो आइकन्स बने हुए हैं लेफ्ट साइड में, एवरी टूल, सी none of us present in this meeting, about 38 of us is there, 37, मैंने 2 सिस्टम पे लॉगिन किया हुआ है, 37 है 44 में से। हम में से हर कोई हर टूल को मास्टरी नहीं कर सकता। व्हाट आई सजेस्ट, सी, लिटरेचर रिव्यू के लिए 4 लोग मिलो, एक बंदा एक टूल लेगा, एक बंदा एक टूल, एवरीबडी टेक वन टूल एंड दे विल डिसाइड कि हम 2 दिन लगाएंगे इस टूल पे। चारों लोगों ने डिफरेंट टूल यूज किया फॉर 2 days, and then discuss with each other what is it that you found unique and useful in that, and share, and then come to a conclusion that this tool is good for this feature, this tool is good for this feature, this tool is, चारों का नॉलेज 4 times हो गया because they cooperated with each other. I am becoming firmly of the view that unless we learn to share things with each other, we will not be able to cope with the immense amount of changes happening all over us. तो हर एक को लिस्ट बनानी है कि लिटरेचर रिव्यू के लिए देयर इज ए हाफ ए डजन ऑफ टूल। लिट मैप्स अच्छा माना जाता है, कनेक्टेड पेपर्स इज मच चीपर देन लिट मैप्स, लिट मैप इज आल्सो चीपर, एलिसिट इज कॉस्टलियर, एलिसिट मैंने पे नहीं किया है, कनेक्टेड पेपर का डिस्काउंट मिला था तो मैंने ले लिया था, लिट मैप पे डिस्काउंट मिला था, आई बॉट इट बट आई हैव नॉट यूज्ड इट टू द एक्सटेंट आई वुड लव टू यूज दैट। तो इसमें मैम ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा है। लेफ्ट साइड में आप आइकन दबाइए, बटन्स देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो बटन्स हैं, ये तो होम हो गया, उसके नीचे देखिए लाइब्रेरी है, उसके नीचे चैट विद पीडीएफ इसमें अवेलेबल है जो हम लोग कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू भी देता है ये, नोटबुक इनका नया फीचर है, इसमें आप लिख सकते हैं, ये जेनी और वो जनरेटर की तरह हो गया है। हाँ, क्लिक करिए मैम, क्लिक करिए इसे, नोटबुक को। नोटबुक के अंदर आप देखोगे एक 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 अलग से टैब आएगा और उसके अंदर राइटर भी इन्होंने ऐड कर दिया है। गॉट इट करिए, और ऊपर देखिए मैम, ये देखिए इसने ना माई फर्स्ट नोटबुक एआई राइटर पे क्लिक करिए मैम, ये एकदम जेनी एआई की कम, मतलब
ये सारे एआई टूल्स एक दूसरे से compete कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फीचर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये टाइप कर सकता है, जैसे आप जेनी एआई में जाएंगे वहां पे वो टाइप कर सकता है। जेनी एआई खोलिए मैम एक टैब में, जेनी एआई, JENNI। ये Yes, जनरेटिव sir. टेक्स्ट का है। हाँ हाँ हाँ, इसमें स्टार्ट राइटिंग करिए जरा, काफी चीजें लॉग इन कर लेंगे तो थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, बट फाइन, बिना उसके भी होता है स्टार्ट राइटिंग। अच्छा, लॉग इन मान Sign लिया। it up. ओके ओके, जब तक आप लॉग इन करती हैं तब I तक sign up with हाँ, आप लॉग इन करो। मैं इसको होस्ट टूल को मैं क्या करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। इफ आई एम नाउ शेयरिंग, आर यू सीइंग माय स्लाइड और मैडम स्क्रीन? The आप हमारा, slide is visible, sir. मेरी वाली दिख रही है कि मैडम की हाँ दिख? जी, हाँ जी, सर आपकी। आपकी वाली दिख रही ठीक है। है मैम। तो एलिसिट कनेक्टेड पेपर रिसर्च रैबिट्स, राइट। और चैट जीपीटी पे हम लोग ने टाइम काम किया। वर्ड ट्यून एनीबडी कैन ओपन अप, वर्ड ट्यून को आप फ्रीली डाउनलोड कर लो। पसंद आए तो इसका प्राइस काफ़ी कम होता है, इनको ईमेल लिख के यू कैन गेट सम डिस्काउंट ऑल्सो, 50% तक का डिस्काउंट भी दे देते हैं ये। बट फर्स्ट यूज द फ्री फीचर। आई अभी अभी जब लॉगिन, अभी जब फिर से मैम आएंगी तो मैं आई टेक हर टू। बार्ड का नया नाम जेमिनी है, ये पुरानी स्लाइड हो गई। देर इज अ वेरी गुड टूल कॉल्ड पेपर पैल ऑल्सो। पेपर पैल भी उसी में आता है कैटेगरी में, जो जेनी एआई क्विल बॉट। पेपर पैल का कहना यह है कि वी आर मोर ट्यून्ड टुवर्ड्स एकेडमिक रिसर्च। क्विल बॉट और जेनी एआई जो है ये जेनरिक राइटर्स के लिए, जो ब्लॉग राइटर्स हैं, ये सब है, राइट। तो पेपर पैल इज मोर एप्ट फॉर अस रिसर्चर्स। जोटेरो इज फ्रीवेयर, JabRef is also freeware, Mendeley is also freeware. Mendeley has been taken over by Elsevier. ये each researcher should manage their citations using these tools. Zotero is most commonly used because it's free and it has a lot of free plugins. Very, very effective tool. Everybody now talks about Zotero. And नेहा मैम और मैम जिन्होंने पेपर नहीं लिखा था, जिन्होंने यूज नहीं किया है, जोटेरो के ऊपर छोटा सा वीडियो यूट्यूब पे कोई भी देख लीजिए, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देयर इज नथिंग great about this. See, there are, don't get bogged down for every feature. There are a lot of AI tools. मतलब you can go crazy, medical advice, gaming। आपको ये पुरानी इमेज है कहाँ से मैंने इकट्ठी करी है, बट देर आर सो मेनी टूल्स कमिंग अप फॉर एवरीथिंग। ट्रांसलेशन के लिए यहाँ एक है, पता नहीं अब 10 हो गए होंगे। सेल्स के लिए, डिजाइन के लिए, दस। आई सेंड यू दिस स्लाइड, यू कैन। हाँ, देर इज वन वेरी गुड टूल, YOU and POE। वेयर इज दैट चैट? मेरा चैट कहाँ है? u.com एंड POE.com। चैट जीपीटी हमने देख लिया है। चैट जीपीटी के साथ हमने तो चैट जीपीटी देखा, और फिर हमने जेमिनी देखा। देर आर एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक क्या है मैम? एंथ्रोपिक कंपनी है जो ओपन एआई से लोगों ने छोड़ के एंथ्रोपिक बनाई थी। इनका क्लॉड मॉडल है, और क्लॉड ने अपना लेटेस्ट जो 3.5 निकाला था, दैट इज इवन पावरफुल, मोर पावरफुल देन 4O। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एआई, ये सब तो आप बड़े आराम से, नैरो एआई अभी करंटली चल रहा है। हम लोग बढ़ रहे हैं जनरल एआई और सुपर इंटेलिजेंस की तरफ से। तो जनरेटिव एआई टूल्स के ऊपर इससे ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन मैडम ने दिया है। आई विल शेयर इट विद यू। ऑल दीज आर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, न्यूरल नेटवर्क। sir. I have वेरी, logged in. आपका लॉगिन हो गया मैम? Yes, sir. ओके, आई विल स्टॉप। यस, Is it visible? अभी नहीं मैम, हो रहा होगा शायद। अभी आप शेयर करो मैम। रशिका तबस्सुम मैम ने रेज किया हैंड में। यस मैम, आपका क्वेश्चन?
Is it visible screen? Yes, it is visible now. Rashika ma'am, you had any question? Rashika ma'am is there. Rashika Tapusum ma'am. सर एक्चुअली मैम ने अराउंड हाफ एन आवर बैक उन्होंने तो आप रेज पॉइंट आउट कर देती मैम मैंने अभी देखा सर एक्चुअली सॉरी एट दैट टाइम वी वर बिजी शेयरिंग द स्क्रीन एंड आफ्टर दैट आई हैव नोटिस दैट oh very sorry I ma'am would like to ask one question if please ma'am sir is allowed. Sir, actually, as you have said, nobody even learn all the tools at one point of time. But there is one uh, crisp combined tool for the LR, specifically for the LR. Because in my PhD work, my guide has said, you just use one or two tools for the data analysis, that is SPSS and the Smart PLS. So I request you to, I mean, lit map is one of the best, as you have said. Is it fine that I can use the lit map for? Ma'am, you see, I used Smart PLS. कल डॉक्टर केऊर सर ने भी डेमो किया था, right? That is SPSS and Smart PLS are data methodology, data analysis tools, ma'am. Yes, sir. No, sir. Please do not get confused with lit maps and those tools. Yes, sir. That I understand. I am giving this example key. As in the data analysis, we have a more focus towards the SPSS and the Smart PLS. So, is there any got it. crisp tool for the LR? Is the lit map? LR के लिए I already wrote, I think in chat that the leader is currently lit maps. I have already wrote it, ma'am. If you see on chat, I'll again copy paste it. Yes, the lit map I know. Lit maps is there, elicit is there, connected paper is there, insightful is there, and there is one more called consensus. Now, see, these tools are competing with each other. So what I tell you today, Vivek Gupta ने बताया कि आज lit map अच्छा है, कल लेकिन consensus अच्छा हो जाएगा मैम. There are people who love consensus more than lit maps. It depends upon, I think, individual. No, it is not depend upon individual. All these tools are rapidly changing day by day. So everybody is working towards becoming better and better for the users because they want to capture their audience. So that is what I was saying. Since March, I've been experimenting because that's my habit. Because 2008, when CBSE brought higher order thinking tools, I downloaded 52 tools from the internet in 2002 to figure out how can I improve my critical thinking skills. After that, I removed all the other 50 tools and I came to only two tools, mind mapping tools and concept mapping tools. Yes, sir. That is where I put my focus. What is the best as per your observation and experience? What Currently, is the for the ma'am, the problem is there is no one shoe which one size fits all sort of. Lit maps में जो है जो diagram बनाता है बहुत बढ़िया बनाता है. Connected papers because they know each other features. Now all these tools they know each other feature. I am currently beta testing one product which has not yet come into the market. The gentleman, the CEO is from Australia and they have taken about 16, 17 faculty members in the country. They are trying to make a product which is going to beat all these products. It's called Albert. It is not yet in market as yet. They are after me every day. Ki, please give me your. I am beta testing that. I am running that. It is beautiful product. Whenever it comes, it is going to capture the whole world. So it is not yet. They are still doing a lot of work. So that is the problem. There are so everyone see make the research जो आपका पूरा process है मैम. Writing के लिए I already told you half a dozen. So 6 products everybody has to figure out in every stage of the research. Right? Now, how will you get that answer कि best कौन सा है literature review के लिए? You put one person on job कि यार तुम 2 दिन तक consensus use करो, free tool. किसी को कह दो elicit use करो, किसी को कह दो connected paper use करो, right? And you can come up with कि आप अपने अपने observations 3 दिन बाद हमारे साथ बैठ के बांटो, right? And then you can share. There are lit maps के ऊपर what I have used all these tools and I found lit maps to having more features and more acceptability amongst all the researchers. So that's how it gradually builds up. But the consensus paper
Ma'am, you just type consensus.app, consensus.app, just type. Any medical doctor amongst the audience? Medical or pharmaceuticals, etc. Rashka ma'am, you can try even this consensus, because every tool has got certain unique aspects which everyone else would not have. Consensus.ai. And the beauty of this is also giving 40% discount to academics. And now I think near the जो सारे जो vacations आते हैं ना, छुट्टियां आती हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, इन लोग के discounts बढ़ जाते हैं. They even go up to 50-60% at times. Just type any question, ma'am. You can even ask. See, it is saying, does exercise improve cognition? Can cash transfers reduce poverty? Just type, click on that. Can cash transfers reduce poverty, or whatever you want to write, ma'am. It is not very easy to answer your question, ma'am. But so far, I have used litmaps and I found it very useful. At least visually, it tells me कि आपने कौन से पेपर छोड़ दिए हैं. And to be sure of कि आपने कोई important paper नहीं छोड़ा है, you can probably go and look for illicit and connected papers also, or insightful, which is free anyway. अच्छा, ये भी साइन इन मांग रहा है. ओके. तो इसमें क्या है कि कंसेंसस की ब्यूटी क्या है कि यस और नो क्वेश्चन भी दे सकता है. और फिल्टर पे क्लिक करिए मैम. फिल्टर पे राइट साइड में फिल्टर है. ईयर डिसाइड कर सकते हैं. स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, नीचे से स्क्रॉल डाउन करिए. मेथड्स पे क्लिक करिए. यू कैन इवन चूज किस तरह के मेथड्स आप चुन सकते हैं. मेटा एनालिसिस, सिस्टमेटिक रिव्यू, आरसीटी, और ये सब जाते हैं मैम सिमेंटिक स्कॉलर. सिमेंटिक स्कॉलर पे बिलियंस ऑफ पेपर्स आर देयर. इट्स ए फ्री. इट्स नॉट. अभी तक हम लोग करते थे इन विट्रो ट्रायल, तो इसमें आप देख रहे होगे मेडिकल के काफी हैं. इनमें स्टडी डिटेल्स में जाइए, नीचे स्क्रॉल करिए. कंट्रोल स्टडीज करिए. जो भी मतलब बहुत सारे हैं, जर्नल्स भी हैं, डोमेन्स भी है. और फिर से चैट जीपीटी पे जाइए मैम. एक टैब आपका खुला हुआ है चैट जीपीटी. अभी आपको ब्यूटी दिखाता हूँ मैं. कंसेंसस आपने यहाँ देखा ना. चैट जीपीटी ने फ्री वर्जन में, अच्छा लॉग इन कर रहा है आपने मैम. हाँ, इसने फ्री वर्जन में आपको एक्सेस दे दी है समथिंग कॉल्ड कस्टम जीपीटीज. नहीं, चैट जीपीटी में लॉग इन नहीं किया है मैम. शायद लॉग्ड इन है, एक टैब में है लॉग. हाँ है. लेफ्ट साइड में देखिए मैम, इन्होंने क्या किया है. फ्री वर्जन में हम लोग को पता भी नहीं लगता, चेंज कर देते हैं. ऊपर लॉग्ड इन है मैम. वेरी गुड. यस. इसमें ऊपर से क्लिक करिए. ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा. चैट जीपीटी पे क्लिक करिए. कस्टम जीपीटीज इसमें तो थे अवेलेबल. एनीवन एल्स हैविंग ए. ऊपर स्क्रॉल करिए मैम, लेफ्ट साइड में ऊपर स्क्रॉल करिए. आप ऊपर की तरफ जाइए. उधर न्यू पे क्लिक करिए. ऊपर जो न्यू एक पेंसिल का आइकन बना, उस पर क्लिक करिए. न्यू चैट, न्यू चैट, मॉडल ऑटो. ठीक है. न्यू चैट पे भी यही आ रहा है मैम पेज. दिस शुड आई टाइप हियर? नहीं, इस पे वो दिखना चाहिए. @ टाइप करिए. @कंसेंसस. इन्होंने फ्री टूल में भी आपका आपका डिफरेंट कैसे आ रहा है मैम. आपके में वो भी क्यों नहीं आ रहा है. आपका में अभी याद है आपको, आपने देखा था एक उधर अटैचमेंट का साइन आ रहा था सबके में. दीपिका राइट, मैम ने. राइट. आई डोंट नो. आपका कैसे पुराना कैसे है, ये वर्जन पुराना कैसे दिख रहा है. दीपिका मैम, आपका चैट जीपीटी वाज डिफरेंट देन दिस, इजंट इट. Yes, sir. हाउ इज इट पॉसिबल. कैन यू शेयर मैम. दीपिका मैम, सॉरी इनका ट्रबलिंग. मॉडल मॉडल पुराना है इनका. बट इनका ये नहीं, अगर ये चैट जीपीटी पे maybe. नीचे मॉडल सिलेक्ट करेंगी ना, यहाँ पर क्लिक जहाँ करिए पर मैम, क्लिक करिए. ऊपर चैट मॉडल. जीपीटी में जो, हाँ यहाँ पर मैम सर इनके पास तो ऑप्शन ही ऊपर नहीं आ रहा. टेम्पररी. अपग्रेड. नहीं, अपग्रेड करके देखो. अपग्रेड तो पैसा मांगेगा मैम. बट एक मिनट मैडम, आप शेयर करिए. दीपिका मैम,
हाँ सर, मैं शेयर करती हूँ सर। मतलब दिस इज वेरी फनी, हाउ कैन चैट जीपीटी बी अवेलेबल डिफरेंट वे इन डिफरेंट मशीन्स, में कैसे डिफरेंट कैसे हो सकता है? हाँ, आपका आप स्क्रॉल अप करिए, मैंने लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करिए आप मैम, देखिए आपके में ये अटैचमेंट का साइन भी दिखा रहा है। हाँ देखिए, एक्सप्लोर जीपीटी आ गया है। सारिका मैम आप चेक करिएगा, एक्सप्लोर जीपीटी क्लिक करिए, ये नया फीचर फ्री, ये फ्री वर्जन में नहीं था, ये पिछले 1 महीने से आ गया है। अब यहाँ पे मैम देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस पे क्लिक करिए, रिसर्च एंड एनालिसिस पे, रिसर्च ऊपर ऊपर मैम, टॉप पिक्स के बाद राइटिंग, रिसर्च एंड एनालिसिस बीच में है, प्रोडक्टिविटी रिसर्च एंड, इसमें देखिएगा आप, कंसेंसस दिख रहा है आपको, देखो कंसेंसस पे क्लिक करिए। अब क्या कर रहा है ये, अब आप हाँ स्टार्ट चैट करिए, देखिए ये इन्होंने कस्टम जीपीटीज बना दिए हैं जनरल पर वो। अब इसमें, अब आप इसमें टाइप करिए, आपको कोई पेपर ढूंढना है तो आप कहिए जो भी वेरिएबल्स आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके बीच में मतलब जनरेट, और अब ये कंसेंसस पे, आस्क द रिसर्च चैट डायरेक्टली विद द वर्ल्ड साइंटिफिक लिटरेचर, आप कुछ रिसर्च क्वेश्चन पूछो जिसमें आपने कुछ वेरिएबल्स यूज किए हो, कोई भी वेरिएबल्स आप कुछ पूछ के देखो मैम, तो ये कंसेंसस से आंसर निकाल के लाएगा, बिकॉज चैट जीपीटी ओरिजिनली जनरेट्स रैंडम वर्ड्स, तो वो साइटेशन ठीक नहीं दे सकता था, इसलिए उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया है कंसेंसस के थ्रू, दैट इज व्हाट पहले पेड पेड लोग यूज कर पाते थे। एक्सप्लोर, अभी सारा जीपीटी जो कस्टम जीपीटीज बनाए हैं, जो फाइन ट्यून्ड चैट चैटबॉट्स बना दिए हैं, अब आप इसमें हाँ टाइप करके देखिए मैम, इतना कुछ बदलाव इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि यू कैन नॉट इवन को, तब मैम सही कह रही थी हम लोग को। आप खुद सोचिए, मैं आईटी का प्रोफेसर हूँ, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ ये माथापच्ची में रोज टाइम जाता है मेरा, और मैं भी यही आंसर की खोज में रहता हूँ कि यार बेस्ट टूल मुझे बता दो ना, एक टूल बता दो मैं उससे काम कर लूँ, एक टूल में सारी चीजें नहीं आ रही हैं। हाँ अलाउ करिए मैम। अब ये कंसेंसस से कनेक्ट होके, अब ये आर्टिकल जो देगा मैम, ये आर्टिकल कंसेंसस के ऐप में ले जाएंगे आपको, और ये जो है ना, ये हेलुसिनेटेड आउटपुट नहीं है, जो चैट जीपीटी से अगर आप जब साइटेशन मांगेंगे तो वो हवाई वाले दे देगा, रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये अब एक रियल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन किसी भी साइटेशन पे क्लिक करिए मैम, इट विल टेक यू टू द कंसेंसस ऐप, इसलिए कंसेंसस का पता हो, इसलिए मैम राशिका मैम, इसलिए आपको डिफरेंट टूल्स जानने की जरूरत है। शुरुआत में एक ग्रुप बनाइए, हर एक लोग जो जो जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन में है, आई नो देर आर 3 people, वन फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट, आई थिंक अखिलेश दास गुप्ता से अंकिता मैम, मीनू ग्रोवर, शिवानी अरोड़ा जी हैं, बाकी दो दो लोग आए हैं वैष्णव इंस्टीट्यूट, गुरु नानक, मीनाक्षी बीसीआईपीएस से, और ये भी जहाँ पे भी है, यू इंक्रीज योर टीम ऑफ पीपल, सब लोग 6 6 लोगों की टीम बनाओ अपने अपने कॉलेज में, उनसे जाके वॉट एवर लिटिल वी हैव बीन एबल टू लर्न इन दीज 5 days, सिट विद देम, शेयर विद देम, एंड देन सबको छोटा छोटा होमवर्क दो कि भाई ये हम लोग के इंटरेस्ट के लिए है, ये 4 चीजें तुम देखोगे, ये 4 चीज आप देखोगे, ये 4 चीज आप देखोगे, ये 4 चीज हम देखेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे और सब लोग ब्लैक बोर्ड पे 10 10 मिनट का अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो मिसगिविंग अबाउट इट। आगे फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए वी हैव टू लर्न टू कोलैबोरेट टुगेदर। भाई जब रेनू मैम ने मुझसे कहा था, आई थिंक यू मैम आपने मुझे अप्रैल में ही कहा था क्लास के लिए, तो मैं इसलिए तुरंत तैयार हो गया था क्योंकि आई फर्मली बिलीव कि, क्योंकि जब हम क्लास बनाते हैं तो उसके लिए आप पढ़ते बहुत हैं पीछे से, तो वो मेरा काम आता है। तो ये क्लास मतलब जैसे एक फिल्म की डायलॉग था कि कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो ये 5 दिन का कोर्स तो केवल ट्रेलर हुआ, अभी यहाँ से आपकी शुरुआत होगी, पूरी फिल्म बनानी है हर एक को। ईच वन ऑफ यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग ऑफ द रेस्ट ऑफ अस, जो अटेंड नहीं भी कर रहे हैं करंटली, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी उन्होंने अटेंड किया है उसको लर्न करके दे शुड शेयर शेयर। और कौन सा टूल मैडम रह गया था, और कोई टूल्स? हाँ, अब डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं मैम, मैं ऐसा करता हूँ,
इसको स्टॉप करिए, फिर जैसे जैसे याद आएगा अभी हम करते हैं। मैंने जो ये डॉक्यूमेंट्स दिए थे मैं इनको खोलता हूँ। एक पहला जो मैंने ये दिया था, मैं शेयर कर रहा हूँ मैम, मैं शेयर करूँ? Yes, sir. ओके, एक मिनट, जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्टली हम लोग जाएंगे। एक एक शेयरिंग किधर गई? शेयरिंग इधर गई, एंड पोर्शन ऑफ स्क्रीन, पोर्शन ऑफ स्क्रीन, ये वाला शीट की। एक ये आर्टिकल शेयर्ड है मैम, ठीक है। ये पहला वाला मैंने, ये जो जीरोथ वाला, जीरोथ जो 20 फाइल्स मैंने आपको दी थी, डेथ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग विल किल अस बिफोर एआई विल किल अस, सितंबर 25 का आर्टिकल है मैम। दिस आई वुड वांट ईच वन ऑफ अस टू रीड इट मोर देन वंस। हाईलाइट करना आता है ना मैम सबको? आप लोग पीडीएफ को पढ़ेंगे और उसको हाईलाइट भी कर लेंगे। हाईलाइट करना सबको आता है ना इसमें? जैसे जो होता है आप कुछ भी हाईलाइट कर सकते हैं, करेक्ट? Yes, sir. Okay, so this is a task to read and understand and discuss amongst each other कि जो statement कह रहा है, now when you read, see the title, the topic. Now not everybody will, it is not like sun rises in the east. It has taken a stand that the death of critical thinking will kill us long before AI. It has taken a stand. People may agree to it. 43 of us are there. If you read this, some of them say no, it will not happen, but some will say yes, and then that's the interest you go. So what I started with Bloom's taxonomy. I said thinking, Bloom taxonomy जो second last layer थी वो critical thinking थी। So remember this, आज जितने AI tools हमने केवल नाम ही सुने, उनके यूज भी नहीं किया है, लेकिन ये सारे टूल्स जो हैं ये हमारी थिंकिंग को आउटसोर्स करने के लिए नहीं बने हैं। वी कैन यूज इट टू इम्प्रूव आवर knowledge and to give us a very good structure, right? So this is important. Then I just keep closing them. Second one was this, जो ये Socratic questioning देख रहे हैं मैम? Yes, sir. Now this is from the site called changingminds.org. Oh, ये what the beauty of this is, Socrates कह के चला गया कि बहुत सारे questions पूछने चाहिए, right? That's how he used to do. ये आर्टिकल 1.5 पेज का है केवल, एंड इसमें कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं और बुलेट पॉइंट्स में दिए हैं, राइट? एक छोटी सी एक्सरसाइज है, सपोज आप ये सारे बुलेट पॉइंट्स को कॉपी कर लो, एक्सेल में जाके पेस्ट कर दो, उसके बाद रेंडमाइज कर दो और फिर किसी को दो और कहो कि क्या इसको आप डिफरेंट बकेट्स में डाल सकते हो। डोंट टेल कि इसने 6 कैटेगरीज बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं, राइट? आप बताओ मत कितनी बास्केट में करना है। Now that becomes a critical thinking exercise. How many baskets would you put all these bullet points? That is a critical thinking activity, and that is what we are required to do. How do you classify things together, right? हमें क्वेश्चन पूछना सीखना पड़ेगा। ये सोक्रेट्स सालों हजारों साल पहले बोल गया, अब उसका बदला हुआ रूप है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कह दिया हमने। तो एक स्किल फॉर ऑल टीचर्स एंड बडिंग टीचर्स, रिसर्च स्कॉलर्स नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ डू यू आस्क क्वेश्चंस। दैट इज a skill which is very much needed. उसके बाद जो ये पेपर था, व्हाट इज ए कॉन्सेप्ट मैप, ये पेपर नंबर 2 है, जो मैंने 0 1 2 हमने देख लिया। ये जोसेफ नोवाक, प्रोफेसर नोवाक ने बनाया था। इसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो ये टूल है cmap.ihmc.us, इस पे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, बहुत ही बढ़िया टूल है। और इनका, एक मिनट, मैं दिखाई क्यों ना, तो एक मिनट, cmap.ihmc.us, ये दिख रहा है मैम? ये दिखा मैम? Yes, sir. So this is a IHMC stands for Institute of Human Machine Cognition. आप डाउनलोड्स पे जाइएगा, यहाँ पे सबके पास 64 बिट की मशीन होगी, डाउनलोड CMAP टूल्स। यहाँ पे 6.04 वर्जन है,
32 बिट 64, जिसका मैक है मैक पे डाउनलोड कर ले। ईमेल आईडी ये सब डालना है। अगर किसी को ईमेल आईडी नहीं है तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो इस पे आप vivekg.iml डाल सकते हैं। बाकी सब छोड़ के टारगेट वर्स विंडो और 14 + 1 15, और यहाँ पे आप इसको सबमिट करेंगे तो नाउ यू कैन, ये लाल रंग में हो गया, यू कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। करेक्ट, ये सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको किसी और साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, लर्न पे जाइएगा। लर्न पे आप जाएंगे तो इट विल शो यू व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्सेप्ट मैप, और वो उस पीडीएफ में दिया हुआ है मैम। जो ये पीडीएफ है इसमें ये दिखाया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, 2 कॉन्सेप्ट हैं, इनको हमने उससे कनेक्ट किया हुआ है, रिलेशनशिप वर्ड से। एंड मैं ना नीचे ही जा रही हूँ, तू भी नीचे ही चल। हाँ, 2 concepts connected with relationship word makes a, एक मिनट, ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रीपोजिशन। ग्रामर वाला प्रीपोजिशन नहीं, जो हाइपोथेसिस से पहले होता है प्रीपोजिशन, राइट। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, आप इसको पढ़ना सीख सकते हैं। और इसके अंदर ये सब इसने समझाया हुआ है लर्न में। और उसके बाद इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हाट इज ए कॉन्सेप्ट मैप, हाउ डू यू मूव, व्हाट आर लिंकिंग। तो ये जो बडिंग रिसर्चर्स हैं, बडिंग स्टूडेंट्स हैं, दिस विल बी वेरी गुड, बिकॉज आपको पता है यू कैन, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें किसी भी टॉपिक पे आप बड़े आराम से कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हो। जो मैंने पीडीएफ दिया है बड़े आराम से समझ सकते हैं। इनके वीडियोस भी हैं, इन्होंने खुद जोसेफ नोवाक ने वीडियो, आई डोंट नो वेदर ही इज देयर और नॉट देयर, बट इन्होंने बहुत अच्छे बना के रखे हैं। सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भी हैं इनके। ओके, तो उसके बाद इसको भी बंद करता हूँ। फिर था ये वाला, थर्ड वाला, यूजिंग चैट जीपीटी इन द प्रोसेस ऑफ क्राफ्टिंग ए रिसर्च पेपर, ए कॉम्प्रहेंसिव गाइड। ये एक पब्लिश पेपर है, 2023 का है मैम। इसमें पूरा पेपर किसी को नहीं पढ़ना है, बट आपको ये देखना है कि चैट जीपीटी को, इसका टाइटल ही ये है कि हाउ डू यू यूज चैट जीपीटी टू क्राफ्ट ए वेरी गुड पेपर। आई कुड हैव बिल्ड द एंटायर क्लास अराउंड दिस पेपर, बट आई वांटेड नॉट टू। ये पहले दे दिए तो ये तो आप पढ़ ही सकते हो, राइट। हाइपोथेसिस क्वेश्चन कैसे जनरेट करना है, इसमें देखिए प्रॉम्प्ट भी दिए हुए हैं। और जो गलतियां करता है उस वो सब, तबस्सुम मैम आप जो पूछ रही थी, देखिए लिटरेचर रिव्यू के लिए गैप आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, रिसर्च क्वेश्चन कैसे पूछना है, कैसे इनपुट देना है, फिर रेस्पॉन्स को इवेलुएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा इस पेपर में। बहुत ही प्यारी चीज है कि जो चैट जीपीटी का आउटपुट है उसको कैसे इवेलुएट करना है, ये ह्यूमन ही कर सकता है। वैसे ऐसे टूल बन गए हैं कि चैट जीपीटी का आउटपुट भी दूसरे टूल में दे दो उसका कोई अंत ही नहीं है। फिर रेस्पॉन्स, बहुत बढ़िया पेपर है रेस्पॉन्स, और बहुत सिंपल इंग्लिश में है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। डेटा कलेक्शन के लिए क्या इनपुट देंगे चैट को, उसने क्या आउटपुट दिया, उसको कैसे इवेलुएट करेंगे, बहुत प्यारा पेपर है। सब बड़े आराम से आपको, रेस्पॉन्स इवेल्युएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। उसके बाद हाउ टू एडिट ए मैन्युस्क्रिप्ट विद असिस्टेंट। हाउ टू एडिट, एक हमने राइट वाला देखा कैसे यूज करें विद द असिस्टेंट ऑफ चैट जीपीटी। ये हार्वर्ड लाइब्रेरी से मैंने डाउनलोड किया था। ये भी बहुत बढ़िया, उसी उसी ये भी जैसे वो वाला पेपर था उसी तरह इसमें इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से समझाया है कैसे इवेलुएट करेंगे, फैक्ट चेकिंग वगैरह। आप लोगों के लिए ये 3 घंटे की क्लास नहीं है पता नहीं कितने घंटे की हो गई है। और ये देखिए, ये चैट जीपीटी 4 जब लॉन्च किया था, ऑल्टमैन इसका ओनर है, मतलब सीईओ है, जिसको बाहर निकाल दिया गया था, फिर से ज्वाइन किया है। अब इसने 2 थिंग्स अनाउंस की थी। फर्स्ट थिंग, ये उसी के वर्ड्स हैं, टू पुट वेरी केपेबल एआई टूल्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल फॉर फ्री। दैट इज व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग। सारे पेड वर्जन्स के धीरे धीरे फीचर्स ये आपको फ्री वर्जन में दे रहा है, और पेड वालों को तो टाइम मतलब उनको ज़्यादा दे रहा है। फिर ये कहता है कि वी हैव मेड द बेस्ट मॉडल। फिर इसने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि ये मॉडल जो हम, जिसे हम आज बेस्ट कर रहे हैं, बट 6 महीने बाद हो सकता है इसको हम वर्स्ट मॉडल भी कहें, राइट। We will create AI and then other people will use it to create all sorts of amazing things, right? So I can really see where we are able to use computers to do much more than ever before.
फिर आया, फिर तो ढेर सारे ये मैंने जो चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स हैं जहाँ जहाँ से मुझे मिले थे, लास्ट टाइम जब रेनू मैम आई थी उस समय ये सब नहीं था मेरे पास मटेरियल, तो वो बढ़ता जा रहा है। इतने तरह के प्रॉम्प्ट्स हैं कि आई कैन नॉट गिव ऑल ऑफ दोज। ये 37 पेज का है, इसको आप आराम से फुर्सत से बाँचते रहिएगा। हर तरह के प्रॉम्प्ट्स हैं, इनको बड़ा करते रहिएगा, जूम कर करके देखते रहिएगा, कॉपी पेस्ट चल जाएगा। ये सब प्रॉम्प्ट्स हैं मैम जो आप चैट जीपीटी पे टाइप कर सकते हैं। ये एकेडमिक पेपर है, मैं चूंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम का हूँ तो वहाँ का पब्लिश पेपर है। उसमें बहुत सार्थक सवाल पूछा है इन्होंने कि विल चैट जीपीटी रीमॉडिफाई द एजुकेशन। इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, इट इज इम्पैक्टिंग आवर स्टूडेंट्स, आवर पीजीपी स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ एमबीए करते हैं, या जो रिसर्च स्टूडेंट है, सबके लिए एजुकेशन और रिसर्च में हम सबके लिए चैलेंज है। क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले से वो सारा एक्सेस कर सकते हैं, सारा डेटा। नाउ आर दे डिपेंडेंट ऑन अस टीचर्स? नो। सो ये बहुत अच्छा है, इसमें स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए बहुत अच्छा है दिस पेपर। देन देर इज अनदर सिमिलर पेपर अगेन published पेपर, राइट, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, वेरी गुड जर्नल। ये जनरेटिव एआई के ऊपर है। जो लोग थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस में ध्यान रखते हैं, दे कैन लुक फॉर। नाउ दिस इज जस्ट ए जेनरिक आइडिया ऑफ बेसिक आउटलाइन ऑफ ए पेपर। ये तो सबको पता ही है, लेकिन हर एक चीज में थोड़े से इंस्ट्रक्शन मुझे अच्छे लगे थे। थीसिस स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ, थीसिस जनरेटर में जाके आप लिख की कोशिश करिएगा। ये ब्लैंक पेज कुड बी यूजफुल फॉर द 11 रिसर्च स्कॉलर्स, या मैं तो मानना है एवरी वन ऑफ अस इज ए रिसर्च स्कॉलर, सो ऑल ऑफ अस कैन यूज दिस, print this out and then try to write out yourself. This will be very beneficial. एक वेबसाइट है कॉल्ड medium.com, इसमें कुछ पैसे मांगते हैं लेकिन कभी कभी कुछ फ्री आर्टिकल्स होते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो उसमें से एक ये मिला था, बेस्ट एआई टूल्स फॉर ऑल यूज केसेस, एआई राइटर्स के लिए। कई तरह के इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत बढ़िया चीज़ें मिली थी। ये मुझे किसी एक साइट पे या ट्विटर पे मिला था। आई विल जस्ट, इसमें देखिए, ये देखिए, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग के लिए। तबस्सुम मैम आप देखिएगा, ये प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं है। वी हैव टू राइट ए बेटर प्रॉम्प्ट, राइट ए प्रपोजल ऑन एयर पोल्यूशन। इट्स वेरी नॉट वेरी ग्लोबल डिस्कशन। एक्ट एज ए रिसर्च असिस्टेंट, यू आर टेलिंग द चैट जीपीटी टू एक्ट एज ए रिसर्च असिस्टेंट, तो आपने उसको एक रोल दे दिया मैम। फिर ड्राफ्ट द ऑब्जेक्टिव सेक्शन for my research proposal on investigating the relationship between this variable and this variable in this। so context भी सेट कर दिया, फोकस भी दे दिया, तो डिफरेंस आपका होगा आउटपुट में। फिर ये देखिए इधर, ऐसे इसको राइट मूव करूं, हाँ इधर से मूव करूंगा। ये डेटा एनालिसिस के लिए बैड प्रॉम्प्ट गुड प्रॉम्प्ट, लिटरेचर रिव्यू के लिए बैड प्रॉम्प्ट गुड प्रॉम्प्ट, ग्रांट राइटिंग के लिए, लर्निंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए, जनरेटिंग लिटरेचर रिव्यू के लिए, राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, रिव्यूइंग के लिए, क्रिटिक के लिए, एपिडेमोलॉजिकल मॉडलिंग, प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं एटलीस्ट अपने पेपर। फिर ये 26 ऑफ द बेस्ट वे टू गेट रेस्पॉन्स फ्रॉम चैट जीपीटी। एक्सप्लेन, कुछ कुछ अपना डालते रहिए। आप लोगों के लिए होमवर्क महीने भर का हो गया है, उससे भी ज्यादा। बिजनेस आइडिया जनरेटर, ये मुझे मिला था, बहुत मजेदार है। हर एक डॉक्यूमेंट में आपको हो सकता है एक एक दिन लग जाए। 6 टाइम सेविंग प्रॉम्प्ट्स, और ये तब है, ये 20 मैंने इकट्ठे कहाँ से किए, जब 200 डाउनलोड किए, उसमें से कचरा हटाया है 199, इसको एडिट करके आपको दिया है सो दैट आपको। और यही हम टीचर्स का रोल है कि वी शुड बी ट्राइंग टू इन्वेस्ट आवर टाइम एफर्ट, बट अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आंखों का ध्यान रखना है, सोना है टाइम से, खाना पीना टाइम से है। वी हैव टू जनरेट, गो थ्रू मोस्ट ऑफ द कंटेंट एंड फिगर आउट कि कौन सा अच्छा कंटेंट है जो मैं अपने, जो हमारी इस क्लास में 33 लोग या 30 लोग बैठे हैं उनके लिए हम क्या हेल्पफुल करें कि नहीं। ये जो है, ये मैम एक कविता गणेशन मैम है, उनकी एक किताब है बिजनेस ऑफ एआई। अगर आप कविता गणेशन टाइप करेंगे तो उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करा मैंने फ्री में, तो उन्होंने 3 चैप्टर फ्री दिए हैं। तो एआई के लिए जो ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं सर, आप अगर आप एआई के बेसिक्स पढ़ना चाहते हो तो ये 3 चैप्टर
बहुत अच्छी तरह आपको समझा देंगे फ्री। इसी किताब का बिजनेस केस ऑफ एआई किताब का नाम है। ग्लॉसरी भी दी गई है एआई की, कविता गणेशन मैम की। और लास्ट ये मुझे एक माइंड मैप मिला था। एक मिनट, इसको कैसे छोटा करते हैं। हाँ, ये तो लिंक था। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ला दें। ये देख रहे हैं आप, ये माइंड मैप है, लास्ट वाला 19th वाला, इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई इन सोसाइटी। ये माइंड मैप बनाया हुआ है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जॉब डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या है, राइट। तो अब क्या बचा मेरी, सब थक चुके होंगे। कुछ तो होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता। We are still here, sir. अब कहेंगे दुखी कर दिया लास्ट में इतना। तो ये देखिए, प्लेगिज्म का खतरा है। देर आर मेनी टूल्स अवेलेबल फॉर टर्न इट इन, नंबर 1 है। बट वही चोर पुलिस का खेल है। हम लोगों को चोरी नहीं करना है। पुलिस के डंडे का क्यों वेट करें हम कि कोई हमारे को टर्न इट इन से पता लगाए। हम यूज करेंगे, टर्न इट इन का सब्सक्रिप्शन है तो भी। और देर आर फ्री वेयर्स ऑल्सो अवेलेबल। तो ये प्रॉम्प्ट, मेरे ख्याल से ये मैंने ऑलरेडी किसी डॉक्यूमेंट से जहां आपको दिया हुआ है उसी से है। सो वील रिमेन इन टच, राइट। क्लास हैज seemingly ended, but it is not ended. It is only the trailer, and the beginning is for the rest of our lives. I hope I made some sense. I don't know, हमने आपको डराया कि कुछ समझाया कि क्या बताया, आप बताइए। नेहा मैम कह रही है प्रॉम्प्ट्स टू बी यूज्ड आर प्री-बिल्ट और वी कैन मेक। हाँ मैम, आपको अपने आप ही मेक करने हैं, बट जितने एग्जाम्पल दिए उनको मॉडिफाई करना है आपको। आपने, आप लोग फेसबुक पे होगे, करेक्ट। जितने लोग हैं वो अगर वीडियो ऑन कर सकते तो ऑन करें, तो लगे तो सही कि हम अपने आप से नहीं बात कर रहे थे। ग्रोथ स्कूल आपने नाम सुना होगा अगर आप, और एक B10X.in, अगर आप फेसबुक पे, इफ यू आर, हाँ मैं भी करता हूँ फेसबुक पे। अगर हम लोग जब ऊपर से स्क्रॉल करते हैं तो सडनली आप देखते होंगे ना, ग्रोथ स्कूल का एडवर्टाइजमेंट आता है, 99 रुपए में 3 घंटे की वर्कशॉप करो, राइट। ये एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि AI के कोर्सेज चलाती है। एंड द, आई विल सेंड यू दैट लिंक। एक रिकॉर्डिंग मुझे एक वर्कशॉप की किसी ने भेजी है, 2-2.5 घंटे की है। अगर आप 99 रुपीज देते तो उसी रिकॉर्डिंग को देखते, या आप कोई फ्रेश बैच, ये कोई पुराना बैच उन्होंने भेजा है। द ओनर ऑफ दैट, वैभव शेषंती, वेरी क्लियरली सेज दैट मेरे हाई स्कूल में 45% थे, इंटर में 45% थे। कहता है मुझे पाइथन नहीं आता। AI की कंपनी चलाता है, इसमें लाखों करोड़ों लोग, वो करोड़ों पैसे लगा रखे हैं वेंचर कैपिटलिस्ट ने। ग्रोथ स्कूल करके कंपनी है। B10X भी 2 यंग ग्रेजुएट्स IIT खड़गपुर के, या वो लोग चलाते हैं। कितने स्टार्टअप्स हैं, इंडिया इस समय नंबर 5th है पूरे वर्ल्ड में। 350 या 400 स्टार्टअप्स हैं AI के ऊपर। लोग यूट्यूब चैनल से उतना कमा रहे हैं जितना सर हम लोग 30 साल काम करके नहीं कमा पाए। तो एकेडमिक्स में तो है भी नहीं सैलरी उतनी। तो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। अब ऐसा नहीं है कि टॉपर होता था स्कूल का वो कंपनी का मालिक बनता था, तो उसके अंडर में लोग काम करते थे। अभी तो 45% पास वाले से लोग पढ़ रहे हैं, CEO उसकी क्लास में आते हैं अटेंड करने। तो दुनिया उलट पुलट हो चुकी है, राइट। तो ये तो भूल जाइए कि आप किससे सीख रहे हैं। मैं तो हर एक से सीखने को तैयार हूँ। चलते फिरते कोई भी मुझे सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने उस टूल पे मुझसे ज्यादा काम किया हो। सुशील जी परेशान हो रहे होंगे। परेशान नहीं होइए सर, हम लोग के हिस्से में जो कुछ आएगा हम उसी को, देखिए अल्टीमेटली जैसे चिड़िया होती है ना, उसकी चोंच जितनी बड़ी होती है वो एक एक दाना ही खाएगी। अल्टीमेटली पूरी रोटी तो हम लोग भी नहीं खाते, कौर तोड़ तोड़ के खाते हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ईच वन ऑफ अस हैज टू डू। बट ये ट्रू है कि नन ऑफ अस, मैं अकेला, मेरे पास समय कम है, अगर मैं सोऊंगा नहीं तो पागल हो जाऊंगा। और ये कई लोग कहते हैं कि AI टूल्स को समझने के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान पहले रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, रेस्ट का ध्यान रखो, फिर जो टाइम मिले उसमें अपने कोर्स का, अपने मटेरियल को रीड करो, उसके बाद जो घंटे टाइम मिले उस पे AI टूल पे काम लगाओ। लेकिन कोलैबोरेटिव वर्किंग इज द नीड ऑफ द आवर, नॉट ओनली टू लर्न दिस टूल बट पब्लिश ऑल्सो। और मैं भी, जैसे केयूर कुमार जी ने कहा, ही इज ओपन टू को पब्लिशिंग, मैं भी ओपन हूँ।
कोई भी हो, हम लोग मिलके साथ में पेपर लिख सकते हैं। मैंने भी कम पेपर लिखे हैं, मुझे बची हुई अपनी एकेडमिक लाइफ में खूब पेपर लिखे। और ये भूल जाओ कौन कहाँ पे है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि देर आर वेरी गुड पीपल इन ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। आई हैव फाउंड ए पर्सन इन विशाखापट्टनम हु इज सो गुड। 10 मास्टर्स डिग्री है उनके पास, एक पीएचडी कर चुके हैं, दूसरी पीएचडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ब्लॉकचेन में, म्यूचुअल फंड पे एक कर चुके हैं। एंड ही लव्स टू टीच रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो देर आर गुड पीपल एवरीवेयर। ये आईटी आईएम्स का दिमाग से निकाल दो। पेंडेमिक के बाद सारे संस्थान इक्वल हो गए हैं, सब ग्राउंड, सब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। जो नहीं पढ़ेगा वो पुराना हो जाएगा, चाहे कहीं बैठा हो। हम सब के लिए चैलेंजेस हैं। ईच वन ऑफ अस हैज एक्सेस टू द सेम मटेरियल नाउ। वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स आपके यूट्यूब पे हैं अवेलेबल, यू कैन लर्न। ठीक है, ओनली थिंग इज हाउ डू यू डू दैट। अब मैं रुक जाऊं बहुत, 15 मिनट तो हम डॉक्टर केओर की क्लास का भी ले लिए। So please share the last, sir. Please share the last slide again because just want to note it down the email address. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Mr. Gupta, for your enlightening session. Your expertise has provided us with invaluable insights into the integration of AI in research. So, thank you so much for your session today. And before we conclude, we would like to have a feedback session to gather the thoughts and experiences of the audience from this FDP session. And for that, I would like to invite Dr. Chitra John to conduct this session. Thank you, Satika. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, for the insightful session, and we appreciate the efforts that you have taken by participating in our other sessions and giving us very valuable feedback. And now we'll be having a feedback session. We request our participants to kindly share your feedback about our FDP. Ma'am, I would like to share my feedback. The FDP was really very nice, starting from the basics of the research writing and then coming on to the use of AI in the research was a real insight that I actually got from the FDP. And it also given an opportunity for us to connect with the great personality of our world, like Gupta sir has just said that now the world is very small and we are now able to connect with each other. So definitely we would love to collaborate with various faculty members with whom we came across in this particular FTP. And really, it was a great learning experience for us. Thank you so much, ma'am, for your kind words and for your positive feedback. Thank you, Anybody else want to share their feedback? I just want to say one thing, that I'm looking forward for more sessions from your organization in future. And I would just love if we can have more sessions from Dr. Vivek Gupta in our college also in future. Thank you so much, ma'am. It motivates us to organize more sessions, more insightful sessions. Thank you. Anybody else? Yes, Chitra ma'am, I found the FDP to be very, very valuable, and all the resource persons were highly, they interacted very well, and it was a great learning experience. And I really liked Gupta sir's session today because the way he explained was very lucid, and I can see that sir can relate very well to his students. So whosoever is studying from him, I think those students are lucky. I really liked the session and would like to have more such sessions in future. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Sir, may I ask you one question? Yes. Meenu. Sir, actually, I want to know from where I can attend more artificial intelligence workshops related to investment, because I am very much interested in stock market, and you are related to this field. So please guide me. This is the first FTP that I am attending, and उसके लिए I एक और चीज जो find मैं it very useful. भूल गया था,
यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे। अंश मेहरा नाम का एक यंगस्टर है जो कंपनी चलाता है यूट्यूब पे। इसका यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। 8 महीने पहले आई एम बैंगलोर में ये स्टेज पे आई एम बैंगलोर के स्टूडेंट्स को बता रहे थे और फैकल्टी को कि यूट्यूब में ये अंश मेहरा का चैनल बहुत अच्छा। बहुत हैं चैनल्स, बट अगर एक व्यक्ति सारे चैनल सब्सक्राइब करेगा तो हम पूरे दिन यूट्यूब ही देखते रह जाएंगे। तो एग्जैक्टली डिफरेंट सर, पीपल शुड एग्जैक्टली। सब्सक्राइब टू डिफरेंट चैनल्स एंड देन डिस्कस जरूर करना चाहिए। और जहाँ तक आपका जो तुम कह रहे हो कि एआई को स्टॉक के लिए, पहले स्टॉक के फंडामेंटल्स, क्योंकि मैंने भी 2015 से स्टॉक पे वो पहले उसमें गए जिसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स है। आप फाइनेंस यस के सर, बैकग्राउंड के हो, यस सर, यस सर। है ना, एमबीए इन तो फाइनेंस। इसकी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है। और शुरू में पैसा खर्च करने की बजाय आपका जीरोधा में अकाउंट है। सर 2 अकाउंट है, जीरोधा और ग्रो में। तो उसमें एंड जो उसका जो वेरसिटी करके उनका एक ऐप है, यस सर, आई एम अवेयर यूनिवर्सिटी ऑफ। का शॉर्ट फॉर्म, वेरसिटी फ्री है। यस सर, आई एम अवेयर ऑफ वेरसिटी दैट। जीरोधा, दैट इज आई हैव वेरी गुड। सीन ऑल यूट्यूब एंड वीडियोस। एंड सेकंड जो है stockedge.com का नाम सुना है? stockedge.com जो है, आई एम इंदौर का पास आउट है बंदा, विवेक बजाज, राइट। विवेक बजाज वो इधर उधर काम करके उसने अपनी कंपनी खोल ली स्टॉक एज। और स्टॉक एज के ब्यूटी क्या है कि बहुत चीपर प्रोडक्ट है इसका, राइट। और आपको नॉलेज भी देता है और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। और दो दो और हैं म्यूचुअल फंड्स, वो दो और यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल्स को सब्सक्राइब करना। एक है विवेक, अगर जो मैं करता हूँ, मैंने जो किया है मैं वो बता सकता हूँ। विवेक अग्रवाल का ट्रेडिंग मेरे नाम ही है, हम नाम है, लेकिन मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेरे को इसमें कोई वो नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। उसका ट्रेडिंग विद विवेक, ये उसका यूट्यूब का, मतलब यूट्यूब का चैनल है विवेक, अगर विवेक सिंगल, सॉरी, विवेक सिंगल ट्रेडिंग विद विवेक करके है। और एक है हमारा नाम सुना होगा, अक्षत श्रीवास्तव, श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल। तो मैं यूट्यूब चैनल दो फॉलो करता हूँ, अक्षर श्रीवास्तव, विवेक सिंगल। एक ही जैसी नहीं बोलते बात, दोनों डिफरेंट बात बोलते, बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, राइट। तो जो विवेक सिंगल है वो ट्रेडिंग में इनपुट देता है। और उसने वो 6 दिन का प्रोग्राम करता था जूम पे, 18,500 रुपये चार्ज करता था जनवरी में। बट मई में उसने अपना इंग्लिश का पूरा 6 और हिंदी का पूरा 6 फ्रीली अलाउड कर दिया। उसके यूट्यूब चैनल पे जाओ, 3-3 घंटे के 6 हैं, वो पूरे फ्री है। और उसमें उसने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, अगर तुम ट्रेडिंग व्यू वगैरह है सब साइट, जो बहुत अच्छी तरह समझाया है। पहले वो फंडामेंटल्स अच्छे करो, फंडामेंटल। क्योंकि शेयरिंग में भी, ये जो स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में, बेसिक्स की जानकारी हर जगह जरूरी है। जल्दी में रिच होने के चक्कर में फक्कड़ मत हो जाना, राइट। यस सर, ये आई डोंट बिलीव इन एफ एंड ओ। मैं इसमें भी थोड़ा आपको, इसमें भी इन्वेस्टमेंट। धीरे धीरे, नहीं, एफ एन ओ तो मुझे पता भी नहीं है नहीं और मैं उसमें एक पैसा नहीं लगाऊंगा। सर, इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। म्यूचुअल फंड में मेरा अभी भी 20% दे रहा है, 20-22%। आई एम हैप्पी इफ इट बीट्स इन्फ्लेशन ऑफ 10%। स्टॉक में इट हैज गॉन अप टू 28% इन October 21। इट हैज वेंट डाउन -10% 5 months बैक। इट इज बैक टू 16% नाउ। माई स्टॉक्स आर गिविंग लेसर रिटर्न देन म्यूचुअल फंड। मेरी लर्निंग तो ये है। सर इवन माई स्टॉक्स आर गिविंग लेसर। हाँ, तो माई उसमें आप कम म्यूचुअल अमाउंट दो, लर्निंग के लिए दो, और उसको सीखो और ग्रुप में सीखो, सर। और जो लोग केवल एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा, मूव अवे फ्रॉम एफडी, गो टू म्यूचुअल फंड्स। यू कैन स्टार्ट विद, तो उसकी अलग से क्लास होती रहेगी। फाइनेंस के हमसे ज्यादा ज्ञानवान बैठे हैं। सर वही वही मुझे थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कि आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते रहते हो, तो आपको पता होगा कि तो आपके मैंने थोड़े। जो जो मुझे पता है, जो मैं करता हूँ, वो मैंने बता दिया। मैं सर भी, एक्चुअली मेरा म्यूचुअल फंड 60% रिटर्न दे रहा है। अरे आई वाह, इन्वेस्टेड तो ओनली आप इनकी 80,000। क्लास कराओ भाई, ये क्लास लेंगे। नहीं 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 सर, मैं तो सिर्फ एक्सिस बैंक के थ्रू करती हूँ म्यूचुअल फंड, बाकी ग्रो और जीरोधा में थोड़ा अच्छा हो जाता है। 60% रिटर्न हो रहा है तो बढ़िया है ना। सर बट आई इन्वेस्टेड ओनली 80,000 बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग। नहीं, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि भाई यंगर लोग सीख रहे हैं। हम लोग ने, सर सुशील जी, हम लोग शायद एक ही उम्र के हैं। तो हम लोग ने तो पूरी जिंदगी कुछ आता ही नहीं था। हमने तो 2015 में सीखना शुरू किया, जाके 10 साल पहले। लेट हो गए। आजकल बच्चों को जल्दी सीखना चाहिए, मनी के मैटर्स को जल्दी सीखना आना चाहिए। केवल एफडी और पीपीएफ में 7% लेके क्या करेंगे?
जब इतना ज्यादा टैक्सेशन हो गया है। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Ms. Sarika Walia to deliver the vote of thanks. Ms. Walia's dedication and hard work have been pivotal in the success of this program, and we are deeply grateful for her unwavering support. Am I audible? Yes, ma'am. Thank you, Sadhika. Thank you, Good ma'am. evening, everyone. On behalf of Research Cell of Banarsi Das Chandiwala Institute of Professional Studies, it is our distinct pleasure to express our sincere gratitude for the successful completion of FDP on publishing in high-impact journals strategies for effective writing and leveraging AI in research. We extend our heartfelt appreciation to our esteemed Vice Chairman, Shri Vipul Gupta ji, and our visionary director, Dr. Aparna Mishra, for their unwavering support and encouragement in making this FDP a reality. Their guidance and mentorship has been instrumental in the pursuit of academic excellence. Our profound thanks go to our distinguished speaker, Dr. Vivek Gupta, for sharing their invaluable expertise on leveraging AI in research. Their insights and knowledge have undoubtedly enriched the intellectual landscape of our participants. We are equally grateful to all the faculty members from various institutions across the countries who have joined us virtually. Your participation has contributed significantly to the program's richness and diversity. Our heartfelt thanks to all the faculty members of BCIPS who actively participated in the program. Your enthusiasm and commitment to professional development is truly commendable. A special word of thanks to the dedicated members of Research Cell of BCIPS, Dr. Chitra John, Dr. Vikas Dahiya, whose tireless efforts were instrumental in the flawless execution of the FTP. Last but not the least, we acknowledge the valuable support of our technical team, Yashvardhan, Balmukund, and Sadhika, whose expertise ensured a seamless virtual experience for all the participants. Thank you once again to each one of you for your invaluable contributions and support. Your presence and participation have made this FTP a resounding success. Thank you so much. Thank Over you to so you, Sadhika. Thank you so much, ma'am. Now, before we close the proceedings for the day, we would like to inform you that BCIPS is organizing its 12th National Conference on Business Transformation and Sustainable Innovation, an Edge to Global Circular Economy, from August 7th to 9th, 2024. This conference offers a fantastic opportunity for publication in Scopus, UGC Care, and other renowned journals. It is a platform for networking and receiving valuable feedback on your research paper. Along with it, there is a best paper award along with a cash prize of 5,000 on each track. Don't miss out on this incredible opportunity to contribute to the global circular economy. You can all register on the link provided in the chat box. Now, I would like to thank every one of you for your active participation throughout this faculty development program. Your engagement and enthusiasm has been truly inspiring. As we conclude, I hope the knowledge and skills you have gained will propel your academic and professional pursuits to new heights. Have a wonderful day ahead and all the best for all your future endeavors. Thank you. Dear participants, we will be sharing a feedback form. We have already shared in the chat box and we will be sharing it in the WhatsApp group also. So we request all the participants to kindly fill the feedback form. Thank you so much. Thank you. Now all the participants can leave the session.